Yo chat, I'm live. अरे भाई क्या हाल है? What's up? 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 And the games have started. भाई मैं 2 मिनट लेट हो गया I think. निहाल indeed. कभी तो ब्रेक लो. अरे ब्रेक तो यार यही मेरे एक्स ने भी कहा था यार, तो मैंने फिर छोड़ दिया ब्रेक लेना. क्या हाल है भाई? So chat, what's up going? What's up? What's up? What's up? What's up? And I think the games have started. Let's go to Nihal Sarin's game. Also, by the way, Chidambaram is leading along with Nihal Sarin. So दोनों गेम बहुत इंटरेस्टिंग हुई. Let me also open up the standings. घंटा like इतना लेट भाई मतलब anyways चैट में लाइव हूँ ना. एवरीथिंग इज फाइन, ऑडिबल, विजिबल, मुझे बता देना एक बार. एवरीथिंग इज फाइन. ये जो भगवान की जो लाइट आ रही है पीछे से, ये पता नहीं क्यों आ रही है आज. रुको भगवान की लाइट क्यों आ रही है? रुको लेट मी ट्राई सेटलिंग इट डाउन. सेटल हुई क्या? नहीं भाई, ये तो गड़बड़ी हो गई. ऐसी ठीक है आई थिंक, ऐसी ठीक है. एनीवेज क्या हाल है चैट? व्हाट्सअप? यो अरे अक्षत भाई, थैंक्स फॉर द गिफ्टेड मेंबरशिप भाई, थैंक्स अ लॉट यार. किसको मिली यार? आई एम ऑलवेज क्यूरियस, मिलेगी किसको? मैं सस्पेंस रहता है. द एजेंट गेम्स, अरे वाह भाई, एजेंट गेम्स, थैंक्स अ लॉट भाई अक्षत भाई. विशी के लिए पूजा रखी है घर पे भाई. भाई कार्लसन ने हराई तो पूजा और पटाखे दोनों साथ में चलेंगे भाई, मुझे लग रहा है. एनीवेज आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन चैट, यू कैन हियर मी एंड सी मी. आई थिंक ऑल इज कूल राइट? बता दो, एक बार कंफर्म करा दो यार. यो अमे भाई, यो ओम भाई, क्या हाल है? और मुझे कब मिलेगी भाई? वो तो किस्मत का खेल है भाई सारा. फिरता था मैं आवारा, ये कैसे क्या हो गया? Anyways, let's look at the game by E-Force. We have the Caro-Can, exchange Caro-Can played by Aravindh Chidambaram here. Interesting. Let's go to Nihal's game. D4, D5. Okay, we have the same. ये निहाल बहुत खेलता है H6 for some reason. Okay. So we have some sort of, I don't know, reti, but weird reti with no. I don't know what sort of structure. This is a weird structure. I've never seen anything like this. But kind of combined, yeah. Fresh लग रही है भाई. अभी लिटरली नहा के बैठा था, अभी 2 मिनट लेट हो गया यार. अरे मुझे कब मिलेगी? बस भाई विद टाइम. Had my exam yesterday. This logical reasoning. अरे nice भाई. Based on Adiban Carlson backlog 1 more GM. क्या बात कर रहे हो तुम? Really? There was a chess GM question in some वो क्या? आपकी शक्ल की लाइट को कम करो, लग रहा है पाउडर लगा के आया. रुको. लाइट कम करनी है क्या? रुको. लेट मी रिड्यूस द लाइट. आई मीन इतना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक नहीं है मुझे, नो ऑफेंस. अब ठीक है क्या? इज इट बेटर? आई डोंट नो. एनीवेज कहाँ थे हम चैट? स्टैंडिंग्स. अरे हाँ भाई, स्टैंडिंग्स ये है चैट. रुको. लेट मी ओपन द स्टैंडिंग्स. ये रहा MP into chess 2 round 13 going on. Last year chat, 3 more rounds to go, and these are the standings for now. As you can probably see, Aravindh and Nihal tied for first place. Leon is 3 points behind, so Leon is playing Chidambaram right now. If Leon defeats Chidambaram, I think that is awesome for Leon. He can catch up. Nihal, of course, playing against I think he's playing against Mitra Baguha. And then Raunak also with some slight chances, but a bit difficult for him. I think he was leading after day 2, but day 3 was not his best day. And Puranik as well with equal number of points. Arjun as well, I think, is out of contention for top place. But I think he's already qualified for the city event, so he's actually not doing so badly. Let's go to the games now. Oh, ये क्या था? Yeah, back. टिकू भाई, बाल वाइट दिख रहे हैं. भाई वो लाइट का असर भी है यार. इतने वाइट जेन्युइनली नहीं है भाई, ऑनेस्टली भाई. वो लाइट की वजह से ना, अगर थोड़े बहुत वाइट हो तो सारे वाइट लगते हैं भाई. कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे भाई, डोंट वरी. वो ठीक हो जाएंगे. एनीवेज रुको भाई, जितने छुपा सकते उतने छुपा ले. ये रोशनी क्यों आ रही है? अरे क्या चाहिए तुझे? रुको चैट, आई विल डू सम मैजिक. रुको. अब वो रोशनी नहीं आएगी भाई. अरे अभी भी आ रही है भाई, क्या मजाक है यार. व्हाट द हेल. एनीवेज I think is this better or was the previous one better? चैट बता देना मुझे. Anyways क्या हाल है चैट? Anyways कितना बोलता हूँ मैं. Salt and pepper काफी लड़कियों से ऐसी लगता है, like जॉर्ज क्लूनी. टाइटल थंबनेल से गुकेश को निकालो, लालची मत बनो भाई. थंबनेल में गुकेश की वजह किसको डालूं यार? मतलब मैं भूल ही गया थंबनेल चेंज करना भाई, टाइम ही कहाँ था. विशी के लिए प्रार्थना जारी है. इंडीड वुमेन्स का कैंडिडेट होता है यार. आज विशी के लिए घर में हवन रखा है भाई. रखो भाई यार. आई थिंक विशी नीड्स ऑल द सपोर्ट वी कैन. अगर कार्लसन को हरा दिया तो भाई इमेजिन करो प्रग के लिए कितना सेंसेशन बन गया था भाई. विशी के लिए तो नेक्स्ट लेवल ही क्रेज हो जाएगा. By the way, knight f4 played by Mitraba. So Nihal Sarin having a very bad structure here. Also bishop c6 is incoming. Also bishop f6. Probably bishop e7 is the move here for Nihal.
and after bishop e7 maybe he holds on, he can trade queens and so on. अभी गेम स्टार्ट हुई, डोंट वरी भाई, अभी भी स्टार्ट हुई है. आज नहाया ना भाई, तुम्हें लग नहीं रहा क्या ये क्या है भाई? ये लाइट क्यों आ रही है बार बार भाई? लाइट क्यों आ रही है? क्या चक्कर है भाई? हेलो, रुको यार, दिस इज इरिटेटिंग मी टू अ लॉट. रुको चैट. Hopefully this helped. Okay, this did not help, or did it help? रुको भाई, एक सेकंड और रुको. Hopefully this helped now. I don't know भाई if this helped or made it worse. I hope not worse. म्यूजिक डबल हो रहा है, really? आज क्या हो गया भाई? OBS सब कुछ OBS में नाच रहा है भाई. ये कौन से भगवान पधार रहे हैं भाई ऊपर से? ये क्या है भाई? What is this? ये कौन से भगवान आ रहे हैं भाई? नहीं आना मुझे अभी ऊपर, जाओ यार. Anyways, why Gukesh is not playing? Chat, can anyone say why? Basically Gukesh का internet issue था, he had to withdraw. By the way, he captured on c6, bishop d7, and if you take here, I basically can take here and here. So he plays rook c1, bishop takes, rook takes, and bishop d6 now. So bishop pointed towards the king side. And well, you would like to also put some pressure on e2 with the rook. That's also possible. You also have the b file to put pressure here. So Nihal is fine, I think. I mean, equal material. He has one weakness, but the bishop defends it very well. उठा लो भगवान, टिक्कू को उठा लो, कुछ भी भाई. ये क्यों आ रही है लाइट यार? It's so irritating, right? Let me see. How can I make it worse? अरे भाई, how can I make it worse? Fuck. और देखो अब तक लाइट नहीं है. जैसे मैं आता हूँ पिक्चर में लाइट आ जाती है भाई. ये क्या है? मुझे उठाने की प्लानिंग चल रही है भाई, मुझे लग रहा है मुझे उठाने की प्लानिंग है भाई. जैसे मैं पिक्चर में आता हूँ वैसी लाइट आ जाती है यार. यो भाई साहब, इतनी ज्यादा. Anyways, I will fix it भाई, I will fix it slowly. I think I will manage to fix it slowly but surely. थोड़ा कम हो गया अब शायद. टुक 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 टुक. हाँ भाई, आज रात को तो चेस गेम ही. हाँ भाई, क्रैकन को अवार्ड मिला पुटिन फॉर सपोर्टिंग वॉर. आई नो भाई, आई नो. मुझे भी अवार्ड मिला था भाई क्रैकन को डिस करने के लिए बाय माई सेल्फ. Nihal needs to win all 3 matches to qualify. Leon has to defeat Aravindh. Yeah, I know, man. I think to be sure, Aravindh and Nihal both have to win 3 games each. Otherwise, तो कोई guarantee नहीं है ना. There's no guarantee they will win. Does Nihal have winning chances in the game? For sure, I think chances तो है, because I think White although has a majority here, but Black के पास pass pawn भी है. So if something goes wrong, it's totally possible to imagine कि ये pawn दौड़ेगा after rook c8, and then this could go to c3 and be a problem. विशियस मैग्नस कमेंटेट करने के बाद उठा लो टिक्कू को. अरे भाई ये क्या है भाई? इस्तेमाल करके छोड़ दिया इसकी तरह, ये क्या मतलब है? गुकेश क्यों नहीं खेल रहा है भाई? गुकेश को संडे फैमिली के साथ मनाना था भाई. गुकेश इज बिजी. वुमेन कैंडिडेट्स को उतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? आई थिंक इट्स प्योरली बिकॉज उनकी रेटिंग कम है. लाइक मतलब वुमेन कैंडिडेट्स में बेसिकली यू कैन सी पीपल हु आर 2600 2500 प्लेइंग. लड़कों में तो 2500 पे कोई कुछ पूछता भी नहीं है किसी को. सो आई थिंक दैट्स व्हाई द क्रेज इज नॉट देयर, एंड इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल इन अ वे. आई वुड नॉट से कि क्रेज नहीं होना चाहिए, बट इट मेक्स सम सेंस, बिकॉज अगर वुमेन में 2500 टॉप कैंडिडेट्स खेल रहे हैं, सो इट विल द क्रेज विल नॉट बी द सेम एज द ओपन वन. मतलब थोड़ा सा कम तो क्रेज होगा ऑफ कोर्स. सेम टी शर्ट. अरे ये सेम टी शर्ट थोड़ी थी कल भाई, ब्लैक टी शर्ट थी कल भाई, कुछ भी. और ये लाइट कैसे हटाऊं मैं? सवाल तो यही है मेन. शॉर्टकट ऐसे होता है. शॉर्टकट ऐसे भी हो सकता है भाई, बट आई डोंट लाइक दिस शॉर्टकट. हाँ, कैसे पीछे आगे का कुछ होगा क्या? हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है. अरे कुछ हो गया. अरे गायब. अरे अरे गायब भाई, मैजिक. यस. अरे छोटू सा आ रहा है साइड से. रुको रुको, इसको भी गायब करते हैं. और आगे, थोड़ा और आगे. हाँ भाई, हो गया गायब. ऑसम. अब मुझे थोड़ी फील आ रही है. नाइस. क्रोमा की, जिस क्रोमा की से मेरी शर्ट गायब हो जाएगी यार. दैट्स द इशू. मेरी शर्ट गायब हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली. आई कैन शो यू. अब मेरी शर्ट दिख रही है. मेरी शर्ट गायब हो जाएगी यार. आई एम नॉट श्योर कि खाली मुंडी देखने का मन है लोगों को.
आई कैन ट्राई, रुको भाई. हेलो चैट, क्या हाल है? मैं हूं भूत टिक्कू. आज हम कमेंट्री करेंगे भाई. एनीवेज, Guha is playing real fast. Yeah, man, Guha is a very fast chess player. He's very, very good at, short time controls. That's his plus point, yeah? I know personally. uh, Nihal is losing. What? कहाँ से losing भाई? निहाल ही गेम ही खोल के बैठे हम. कहाँ से losing? ये defended है भाई. ये defended है. Don't worry भाई. He's fine. Nihal is fine. And Chidambaram is also the leader, by the way. Chidambaram की position भी काफी solid ही लग रही है. Yeah, maybe he's slightly better, but knight f1 now, controlling f4 should be very solid for Chidambaram as well. And Arjun की game looks slightly worse for him. I think c3 pawn बहुत weak है, so I think Puranik should be slightly better. Yeah, knight f4 is possible indeed. Sahil is winning. By the way, YouTube is crazy, man. YouTube ने दो नए फीचर निकाल दिए, एक सुपर थैंक्स और एक गिफ्टेड मेंबरशिप्स. आज पहला सुपर थैंक्स मिला मुझे. आई थिंक पैवकल भाई ने दिया था भाई. नाउअडेज यू कैन गो टू एनी चैनल एंड देन यू कैन ऑल्सो वीडियो के ऊपर सुपर चैट कर सकते हो. मैंने कहा भाई ये नया पहला आज मिला. नाइस यार, क्या क्रेज है. थॉट्स ऑन केपी जेनोसाइड इन 2020. यार जेनोसाइड की बात कर रहे हो यार तुम यार. अभी गेम फोर्स करते हैं वीडियो पर. एग्जैक्टली, आई वाज सरप्राइज कि भाई ये तो अलग ही स्कीम है भाई. Why you are not IM? I could go into depth about why resources are scarce for people who are adults, but I could also say कि भाई मन नहीं था लेने का टाइटल, ले लेंगे जब भी मन होगा. वुमेन्स कैंडिडेट्स कब से है? I think it was in June, July, right? जून जुलाई में था ना कैंडिडेट्स, आई एम नॉट मिस्टेकन. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स. तो टाइटल से गुकेश निकाल दो. अरे हाँ भाई, ये बात तो है, टाइटल से हटाना चाहिए. देखो थंबनेल से मुश्किल है, टाइटल से आई कैन रिमूव गुकेश. आई थिंक दैट्स, बट रहने दो भाई, ठीक है ना. ही इज इन एक्शन समवेयर, ही इज नॉट इन एक्शन ऑन द बोर्ड, बट कहीं ना कहीं तो एक्शन कर ही रहा होगा वो. क्या पता स्ट्रीम में देख रहा हो, कह रहा होगा क्या आदमी है यार, मुझे टाइटल में डाला हुआ है. इफ निहाल विंस एंड प्लेस सिटी वेटिंग फॉर निहाल वर्सेस मैग्नस. डूड पहले विशी वर्सेस मैग्नस तो होने दो यार. कैसा एक्शन वो तो वही बताएगा ना. Arvind is strong player. I know he's strong, man. He's very strong. But Leon is also very good, by the way. Although I've in my 2 games against Leon, both were draws. Yeah, I mean he's still very strong. So let's go to the game of Nihal Sarin again. Because I think Nihal or Arvind and these two are the main players now. That's very clear. Polkar women world champion थी, of course 2700 भाई. I think she is the only woman player to ever reach 2700, right? If I'm not mistaken. चैट को confirm करा दो. आपकी लाफ्टर रिकॉर्ड करके भेजो ना, कॉलर ट्यून रखना है. तो रियल रिकॉर्ड कर लो भाई. निहाल का जितना मुश्किल है उसका TB2 कम है अरविंद से, तो ही हैज टू विन देन. फिर तो जीतना है ना, फिर तो कोई चांस नहीं, तो जीतना पड़ेगा. आज चेस का आनंद आएगा इंडीड. या शी इज द ओनली वन. रक्षित भाई अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं. शी इज द वन. NB4 is a serious threat now. Since Queen C3 पे G7 mate नहीं होगा. Yeah, it is a threat, of course, because he played Queen G5, defend G7, also defends the knight. But I think it's not difficult to get rid of this Rook C4 maybe. Just controlling B4 and also getting out of this fork. It should be enough. Nihal कितने points? Chat, Nihal और Aravindh both are on 25 points. They are leading the event, so one of them will win the tournament, and most likely. And ये दोनों के games बहुत important है. Please make a compilation of your laughter. That's a very good idea, भाई. The only question is कि मतलब वो ढूंढ रहे हैं कौन laughs. If somebody is that free, please find enough laughs and put it on Discord. I will add the video myself. ये क्या है भाई, बाल रेस करो तो लाइटें आ जाती है भाई इतनी सारी. ये क्या हो रहा है भाई. चेक व्हाट्सएप. ये लो भाई, प्रणाली लाइक पहले व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लेते हैं, रुको. ओके ठीक है. नथिंग दैट इंपॉर्टेंट. आप अंतर्यामी हो. आई नो यार, क्रेडिट मुझे मिला नहीं उसका. थैंक्स अ लॉट फॉर द क्रेडिट. कार्लसन हारेगा तो कितनी रेटिंग कम होगी विशी की? भाई विशी की कम से कम नहीं तो 7 पॉइंट बढ़ेंगे भाई. 7 से 8 पॉइंट बढ़ेंगे, 7 पॉइंट बढ़ेंगे विशी की आज जीतने पे. एंड ही विल बिकम वर्ल्ड टॉप 7 और समथिंग. जस्ट टू हैव अ ब्रीफ लुक व्हाट रेटिंग विल ही रीच. Just a brief moment.
He's 276-2-7-6-1. He will gain 7 points. He will go to world number 7 if he defeats Carlson. So, a lot of incentive there. And even if he loses, I think he will be world number 11 now. So I think he has incentive to win there. हाँ, वर्ल्ड टॉप 10 में थी और कस्पारोव को हराया था भाई. Is Novich Open a strong tournament? Yes, of course, man. Prague is playing there. आप कभी यूएस गए हो? हाँ यार. विशी से बदला लेगा लास्ट मैच का कार्लसन इन. भाई उल्टा बोलना था. मैं तो कह रहा था यस मनी पे. अब क्या बात कर दी आपने? उल्टा भाई. वर्ल्ड चैंपियनशिप का बदला लेंगे विशी सर. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इज माय कैमरा गॉटन स्टक अगेन? ये क्या पोज है भाई? इतना शरीफता का पोज. ओ माय गॉड, ये क्या पोज है भाई? रुको. ये कैसे? अरे कैमरा कहाँ है? इतनी शराफत. हाँ, आई एम बैक चैट. आई एम बैक भाई. ओके चैट, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. आई होप सो. अरे भाई आज क्या हो गया यार? जिंक्स कर दिया किसी ने हमारी ओबीएस को, मुझे लग रहा है ना? कोई ना कोई तो जिंक्स किया है. एनीवेज, मेरी शर्ट गायब हो रही है. देख रहे हो भाई तुम? कपड़े उतर रहे भाई स्ट्रीम पे. एनीवेज, कूल पिक्चर प्रोफाइल पिक रखो यूट्यूब के. वाह, आपने झूठ बोला इसलिए फ्रीज हो गए. अच्छा, what is Sharifta? Sharifta means by innocence. By the way, knight b6, white should not take on b6 because मारने के बाद 8 takes b6 I think would be better for black because he connects his pawns now and a files opens up. So I think probably moving the rook is better, not to capture on b6. He should not, adjust black's pawn structure here. Indian shows crazy move knight e3. अच्छा, उसे मिस किया गया कुछ? मैंने जिंक्स नहीं किया. पता है जय भाई, आपका नाम तो बहुत सही है. यो टेस्टेक वर्ल्ड. Chat, do you like the stream? Bye. Let's get 200 likes. And if you're here for the first time, to subscribe. Sharafat hai bhai. For freeze. I feel 93 is too tough to find. Cam frozen? What? ये क्या pose है भाई? ये क्या हो रहा है यार? Chat, what the hell is happening? How am I freezing again and again? अरे? What the hell is happening, dude? अरे? गायब ही हो गया भाई. है चैट, ये किसने काला जादू किया भाई? भांगर की बूथ. मजाक कर रहे थे हम लोग यार. हम तो ऐसे ही आए थे मिलने. हमारा ओबीएस ना जिंक्स करो रे. स्टेप क्या? दिस इज परफेक्ट नाउ. नाइस करण भाई, आप बंदी चुरा के भाग गए मेरी. उसके दिमाग में मैं ही रहूंगा लेकिन हर बार. याद रखना तुम. यहां से तुम गायब कर दोगे मुझे, उसके दिमाग से कैसे गायब करोगे? मैं भांगर का बूथ हूँ. उसका नाम बैनर्जी नहीं था यार. आई थिंक यू नीड न्यू कैमरा सेटअप. नहीं भाई, कैमरा सेटअप सही है. आई थिंक जिंक्स सा हो गया फॉर सम रीजन. मेरे कपड़े उतर रहे हैं बस फॉर सम रीजन. अटकुट में विन मिला तो भी सेम रेटिंग मिलेगी क्या? नहीं. He needs to defeat Carlson in the classical. And to be honest, अगर विशी आनंद ने कार्लसन को क्लासिकल में हरा दिया ना, he's like 50% guaranteed to win the tournament. Because not only will he reach the first rank in the tournament, but सबसे बड़े contender को पीछे कर देंगे. So he needs to really win today if he wants to win the tournament. Draw भी चलेगा, but we will give him best chances. By the way, some tactics in the air, yeah. मतलब some pressure here, some pressure here. So Guha kind of putting some pressure on Nihal. Luckily, Rook G4 possible नहीं है अभी. When Sahil bhai trains in gym, chest assist. Nice. टिक्कू. अरे भाई अटके नहीं है भैया. It's all fine. It's all fine. By the way, I should check यार मेरा वो कितना है अब. हाँ, बढ़िया. Meanwhile, Wesley laughing in the corner. भाई Wesley is ranked 3rd right now, right? Wesley पीछे है भाई. और Wesley के इस बार black pieces आएंगे. So very unlikely he wins. And if Vishy wins, he will have at least a 3-point lead. At least. वो करना है गुहा कहाँ से है? गुहा भाई मेरी मेमोरीज से पैदा हुआ है क्योंकि उसने मुझे हराया था यार. भाई कश्मीर में फिर से एक्सप्रेस शुरू हो गई है. पता है यार. आई नो मैन. लाइक मतलब फिर से वो लोग टारगेट कर रहे हैं. आई थिंक मूवी से इंस्पायर हो गए. जैसे होता नहीं है मतलब नॉट टू मेक अ डार्क जोक, बट जैसे मतलब कई बार तुम देखते हो मिल्खा सिंह मूवी और लाइक मैं भी लाइफ में कुछ करूंगा बड़ा, वैसे कश्मीर फाइल्स से इंस्टेड ऑफ द the entire country got motivated, terrorists also got motivated for some reason. I don't know why. टिक्कू टू कैमरा तुमसे ना हो पाएगा.
अर्जुन का क्या हाल है? अर्जुन बढ़िया है भाई, बढ़िया है. He has a okay position, not better for sure, but okay. यो पवन भाई क्या हाल है? कैमरा स्टक फिर से? It can't be true. अरे मजे मत लो यार तुम, मजे मत लो भाई, फिर से कैमरा स्टक. चैट बाय द वे, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, विशी अगेंस्ट कार्लसन. मतलब विशी अगेंस्ट कार्लसन, दैट विल बी सच एन इंपॉर्टेंट मैच. इफ विशी विंस तो तहलका मच जाएगा भाई, तहलका. मतलब मेरा मन कर रहा है पटाखे ऑर्डर करके रख लूं भाई. करूं कि नहीं करूं पटाखे ऑर्डर? क्या बोलते हैं, पटाखे ऑर्डर करें क्या? रुको यार, मैं घर पे बोलता हूँ, पटाखे मिल सकते हैं क्या? रुको रुको रुको, लेट मी आस्क. एक्चुअली आई एम नॉट इवन किडिंग. रुको 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 रुको, पटाखे ऑर्डर हो सकते हैं क्या शाम से पहले? मजा आ जाएगा भाई अगर काल से बता दिया तो भाई, पक्का पटाखे भाई. यार मैं खुद ही मुंह से निकाल दूंगा पटाखे भाई. ऑर्डर लेकिन शाम तक कैसे आएगा यार? कैमरा स्टक, यार कंफ्यूज मत करो यार मुझे. हाँ स्टक नहीं है. बिशप E5 हियर. आई एम वरीड अबाउट F4 देयर. बिशप E5 के बाद की फोक ना लग जाए थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल बिशप E5, I am worried कि F4 might be a problem because there is no check and rook defends F4, so I can't even take. The pawn is actually pinned but the rook is not. When did Vishy won the last time in class? I don't remember. It's been a while. भाई इतना डार्क जोक मत मारा करो. People are getting. I know भाई, मैं खुद कश्मीरी हूँ यार. मुझे पता है. वही मैं कह रहा हूँ. मुंह से ही निकलना, कहीं और से मत निकालना. ये क्या यार? अरे बाजार जाके ले आओ भाई. बाजार में जाऊंगा तो भाई मतलब स्ट्रीम कौन करेगा? When you say Magnus का against draw होना is bad result, it's not a bad result, but win. It's like मतलब imagine करो यार, देखो मतलब एक होता है लॉटरी टिकट लगना 5,000 रुपए का. हाँ, यू फील हैप्पी कि 5,000 का लॉटरी लगा, अच्छा है भाई, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दे पाऊंगा अच्छा वाला. बट एक होता है भाई 5 करोड़ लगना, मतलब इट्स नॉट कंपेरेबल. मतलब उस दिन तो भाई दिमाग खराब रहता है यार. बस गाली मत निकाला मुंह से. गाली नहीं भाई. Rook E6 here. Rook E6 is possible. Yes, that makes a lot of sense because you want to protect your 6th rank and you also want to double up rook. So it kind of does 2 jobs in one. And when you can do 2 jobs in one, it makes sense. मुंह से ही निकालना आवाज तक की, कहीं और से नहीं, ऐसे बोल रहा था. हाँ भाई, यहीं से निकालूंगा भाई. ऐसे शौक हमने पाले नहीं है. हाँ बाजार में नहीं. आई थिंक वैसी वो वाली आवाज तो आएगी नहीं. घर में तो पटाखे चल नहीं सकता ना. बेटर है कि मतलब स्ट्रीम पे ही चला देंगे भाई. लाइक वी कैन ऐड सम म्यूजिक बैकग्राउंड, पटाखों वाला पुचू पुचू पुचू. मस्त फील आएगी भाई. क्लासिकली विशी का विन का कोई चांस? बिल्कुल भाई, पूरा चांस है. व्हाइट सफेद पीसेस है तो चांस तो पूरा यार. व्हेन यू हैव द व्हाइट पीसेस देयर आर ऑलवेज चांसेस भाई, ऑलवेज ऑलवेज. बट व्हाई बिशप E7? बिशप अच्छा सॉलिड है ना. अगर ये खेलेंगे तो ये मारने के चांस आ जाएंगे यार. लेट्स नॉट गिव द बिशप, जस्ट गिव द पॉन एंड मेक द बिशप पैसिव. वो जब भी हम क्वीन हटेंगे वो रुक हटा देगा भाई, वो मरवाएगा नहीं रुक. क्यों अचित भाई क्या हाल है भाई? कम्युनिटी स्ट्राइक आएगा, मत डालना स्ट्रीम पे. क्यों भाई? अगर विशी आनंद शाम को जीते भाई, मैं पहले वीडियो ढूंढ के रखूंगा पटाखों की, पूरा प्ले कर देंगे भाई और स्ट्रीम पे नाचेंगे भाई. अगर विशी आनंद जीत गया तो फील आ जाएगी भाई. व्हाट अबाउट F5? F5 opens up your king man. It's usually not a good deal. आपने ऑलरेडी एसेस खेल के रखा है, अपने किंग को सेफ रखो भाई. That's very important. What to do Vishy will play today? I expect him to play 1E4, but also depends on how confident he feels because he lost the last game against Wesley kind of in the tie breaks. Although he drew the classical, so he might be a little bit worried. Rook A4 played by Rook E6 by Nihal. He's trying to develop rooks now, and also Rook G6. Yeah, I refresh bhai. If Vishy wins, we will burst crackers instantly. Exactly, bhai. Virat Kohli crying in corner. By the way, I have never burst crackers for India winning in cricket. Please don't hate me for this, but cricket chess के लिए बजाऊंगा भाई मैं. E5 पर डबल करेगा रुक. हाँ करना चाहते हैं, but the thing is A7 is also hanging, so उसका भी ध्यान रखना है. White could just play E3 and then if he double, he can just capture on A7. Bishop A3 not the best of moves. Bishop on B2 was very strong, I think, and this trade is actually in black's favor. I feel he can just play C6 now and or Queen E7 and defend this pawn. छोड़ो भाई, गाली दे दो, एक मैसेज नहीं पढ़ रहे. ये क्या है भाई? Will Vishy have white in Armageddon? Yes. Vishy will also have white in Armageddon. So even if he wins there, that's also a win against Magnus Carlsen. ठीक है ना? That's what matters. That is what matters. Queen H5. Yeah, Queen H5 possible thing is, are we threatening anything Queen H? कुछ हम threaten कर रहे हैं क्या? I don't think so. Not much. He can just play E3 and defend this pawn. And the Queen H5 is kind of offside कोने पड़ी है. पुराना मैसेज पढ़ो फॉर कॉन्टेक्स्ट. अच्छा भाई गाली मत देना. ये मैंने अच्छा टीवी पे लगाया है. अच्छा 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 ठीक है भाई. Queen E7 after takes. Yeah, he plays Queen E7, putting pressure now. And
for example, the queen also attacks the rook, so e3 is no longer possible, and now probably the e2 pawn will be lost and black has equalized. ठीक है गुरकीरत भाई. If anyone wants to check out Adiban Bhai, I think he's apparently Chess 24 channel. Do check Adiban out. He's there. शादी करके नया नया दूल्हा है. If Vishy wins the classical, how many 80 points? He will gain 7 points, chat. He will become world number 7 if he wins today against Carlsen. You could capture on c2. That will be a draw, I think. Rook takes e7, rook takes a2, and then rook to d7. Rook f8, rook takes a7, and that will be a forced draw. Arjun losing? क्या बात कर रहे हो? I mean, he's not losing, he's worse, but I think he should hold this. He should be able to hold this. As long as bishop can be exchanged for the knight, bishop dominates the knight for now, it will be a draw. ये pawn defend कर लेंगे ऐसे करके, and king will come to d2 and defend. Aravindh की गेम देखते हैं भाई. Arvind ये equal लग रही है, but I do like his pieces, yeah, for now. Attacking at 7, putting some pressure here, controlling e5. So I do like Arvind's pieces, and he looks like in a slightly better position. Nihal, on the other hand, looks like in an equal position as well. But this game might be a dead draw. आज तो अनीशा इन धर्म संकट, ये तो है यार अनीशा, आज तो तुम कार्लसन को सपोर्ट नहीं कर सकते यार, ध्यान रखना भाई. What a calculation भाई. Thanks यार. Has Adiban peaked? I don't think so. Aymanyu blundered from winning position. Really? When was he winning? He had rook to d5 here. Acha. He completely missed it. Acha. Rook to d5. And if you capture like this, for example, he takes with the knight. And now c3 is lost. Yeah, that makes sense. He missed it by. But एक ही move के लिए था winning. So not easy to see always. Let's go to Nihal's game. Nihal is still thinking. समय रेड भाई, समय स्ट्रीम भी नहीं कर रहा है. आई होप ही हैज पीक्ड फॉर दिस मैच. या मैन, आई डोंट नो किसकी पीक की बात कर रहे हो, बट सारे इंडियन ही तो सब पीक ही करे तो बढ़िया है. Rook e1 is possible as well, also possible. I think he went for the simple solution, yeah. And rook d7, rook f8, rook takes a7, and they will agree to a draw soon. आज सीरियस रोल, yes, आज 3 ही राउंड है चैट. समय watching you on Twitch, really? समय does not stream on Twitch, as far as I know. बीसा के साथ देख रहा है आप. अच्छा ऐसा है क्या? एक बार नजर मारे ट्विच पे अगर ऐसा है तो. लेट मी क्विकली हैव अ ब्रीफ लुक इफ दे आर एक्चुअली देयर. बाबू की स्ट्रीम पर. अरे बाबूजी जरा धीरे चलो. अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं बाबूजी ऐसा ना करे बाबूजी. अरे कैसे भाई? रुको मैं लिखता हूं वहां पे कुछ. नाइस. Peaking is bad, you only go down from there. But going down is always not a bad thing, man. I think many people would agree to that. Anyways, let's go to the game. Nihal has drawn, chat. So with this, Nihal goes to 26 points. So Chidambaram अब 1 point पीछे है. Let's go to Chidambaram's game. And by the way, if Leon wins, then Leon goes to 25. So पूरा 3 लोग पूरा top पे आ जाएंगे यार. Let's go to Leon's. This game is all critical right now, and it does feel like Chidambaram is better. He might just win this. King थोड़ा तो लग रहा है कि मतलब एक सॉक्स उतर चुके हैं और अब नेक्स्ट अंडरवेयर हो सकती है. सो आई थिंक प्रॉब्लम तो है. अगर अनीशा कार्लसन को सपोर्ट करे, उसको अनमॉड करके मेरे को बॉन्ड बना देना, ठीक है भाई. विशेष कार्लसन पर बेटिंग कराओ आज. नहीं भाई, यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर बेटिंग. और ट्विच पे स्ट्रीम करेंगे तो कोई देखने नहीं आएगा. एंजॉयिंग कमेटी. थैंक्स खायर भाई. कैमरा स्टक यार, डराओ मत यार. नहीं यार, कैमरा स्टक नहीं है. क्या पी रहे हो? It's called water. Russian water. आज कार्लसन वर्सेस आनंद कर दो 50-100 मेंबरशिप डोनेट इफ विशी डिफीट्स मैग्नस. भाई 50-100 मेंबरशिप किसके डोनेट करे भाई? लाइक किसके? खुद के? दैट इज लाइक यूट्यूब को कॉल यूट्यूब ये कैश ले ले. That makes no sense. Where does this Twitter chatter go when you stream with Tanya, Sagar and Shrikant? Who, first of all, no offense, who is Shrikant there? ये श्रीकांत कौन है भाई? शिवम भाई आपके स्टेटमेंट सब कुछ ठीक है. श्रीकांत कौन है? भाई साहब वो blunder. He blundered. What the hell just happened? He had to play 95. He completely blundered. And now FG4 is winning for Leon. भाई साहब, lucky break for Leon. Leon could catch up with Arvind now. It might turn out to be a 3-way race.
Chidambaram has really improved a lot. Rare to see an ex-finance minister grinded down. Yeah, I mean, he left Congress. He needed some new endeavors. Since then, he's focused on a new target for himself. Who is qualified to champion chess tour? Arjun, Nihal. So only Arjun so far, and whosoever wins from this will also get to play one tournament, I think. भाई ये क्या था भाई? Like, what was this? Because I think it's because there are 2 pawns here. Even if I take here, I still have the e4 pawn. So what is your plan? Oh wait, is it King G2 Rook H1? Is it King G2 Rook H1? Bhai sahab, if that is the plan, that is a brilliant piece sacrifice. Let's see chat best move क्या है? Black ने मारा ही नहीं. Black ने मारा ही नहीं. Black भी डर गया भाई. ब्लैक में ही तरह है भाई, ब्लैक में ही तरह है. एंड चैट यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है बाहर. इवैल्यूएशन मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, इंजन को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता. Why Vantika is always winning when I see the bar or position but fails to come? Because I think she bribed the bar before the game and that's why she is always winning on the bar. Usually जब मैं छोटा था ना बचपन में चैट, when I was young, तो मैं जब भी घर से टूर्नामेंट खेल के आता था, I would always have these winning positions and I would reach home. ऐसे घर पहुंचता था मैं, दिल्ली में टूर्नामेंट है. I played some FM. I was like 13 then. खेल के आया, किसी FM से हार गया, घर पहुंचा, मेरी शक्ल ऐसे है. एंड मैं बोलने वाला होता हूँ, क्या कहते हैं, हार गए जीती हुई गेम. लाइक दैट वाज सो कॉमन कि जीती हुई गेम हारना, कि मेरे डैड को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है. So yeah, that's I think Vantika is also a victim of that same thing. Why bad quality on after party streams? Tanya stream has much better quality. यार मुझे वो zoom ही setup करना नहीं आता यार. मेरे को I am not able to set up the best zoom there for some. जब तक मैं setup करता हूँ stream खत्म हो जाती है. King F6. भाई King F6 कैसे खेलोगे भाई? अच्छा Knight F6 कह रहे हो क्या? Blocks the E file in that line. Yeah, but still, the king is stuck on h8. No, king g2, rook h1 should be game. It should be very deadly at least because कल को मैं queen d1 भी खेल सकता हूँ. Oh, he plays queen d1 right now. भाई मुझे कॉपी क्यों कर रहा है यार? Bad Chidambaram, bad Chidambaram. Saga shared a very similar story. Yeah. It happens to every chess player, dude. Everybody who does not make it. आज आनंद से कार्लसन कर दो. अरे भाई, what was the winning? There was no winning move. But I think FG4 was the way to challenge white here. जीते हुए मैच को हारने वाले को एंटी बाजीगर बोलते हैं. भाई यार बेइज्जती करनी है, सीधा मुंह पे करो यार. एंटी बाजीगर क्या बोल रहे हो? साहिल को कॉपी करो, अरविंद हार जाएगा. RSS तो ओनली मूव. भाई आपको ये VD वर्सेस डूडा नहीं है भाई. प्रांशु अग्रवाल जी, RSS इज नॉट द ओनली मूव. इनफैक्ट यहाँ पे अपेरेंटली F4 इज द ओनली मूव. जस्ट इमेजिन फ्रॉम ब्लैक, तुम्हारे opponent ने पीस दिया हुआ है and the best move is to ignore it and play F4. I mean, how hard it is. I think Chidambaram will win this game and then he will have clear lead and Nihal will have a lot of. Oh, he finds F4. I take it back. He finds F4. That's why he's playing the tournament and I'm commentating. वो वीडियो हाँ डू ऑफ था भाई exactly. मैं आ गया. वेलकम आयुष भाई. Why Nihal is rated low in FIDE Rapid? बिकॉज वो ऑनलाइन से फुर्सत ही नहीं मिलती उसको. वो ऑनलाइन में सबको पेल के बिजी है. If Anand wins, Sahil donate 100 memberships today. Thanks for the confirmation and support, bro. भाई 100 memberships किसका भाई? 100 memberships to the समोसा. लाइक समोसे की membership चाहिए आपको, वो तो हमें फ्री में मिलती है भाई. वो तो मैं बहुत पेलता हूँ. Chat, do like the stream. Let's get to 300 likes. अगर 300 लाइक हो गए तो 2 बंदों को membership confirm. Let's go भाई. देखो कितनी आसानी से membership बांटता हूँ मैं. Leon, no time. Yeah man, time is low. बट थिंग इज पूरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि व्हाइट कुड ऑल्सो ब्लंडर. कल को व्हाइट का किंग खुल गया ना तो क्वीन घुस गई तो कुछ भी हो सकता है. डायमंड मेंबरशिप. अच्छा एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट. एक डायमंड मेंबरशिप गिफ्ट करने का कॉस्ट 500 रुपए है, ठीक है ना. 500 इंटू 100 कितना होता है यार? 50,000 रुपए. वेरी गुड. एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, लेट मी रिएक्ट. 50,000 मतलब मरवाओगे यार तुम. Is Leon part of WSCA? What's WSCA? Move for Aravindh. He plays knight to e5, the best move. And Leon's only move now is f3. And he finds f3 by. He finds f3. What a pawn chain. Dude, just imagine. ये पूरी pawn chain एक ही पर्पस के लिए, क्वीन को अंदर ना घुसने के लिए. अगर ये क्वीन घुस गई तो it's mate in 2. So now white should sack. Let's go. Knight takes f3. Let's go.
I have not heard about West Bay Chess Academy, भाई. अच्छा आनंद, अच्छा I've not heard about this. Surprisingly, I've not heard about this यार. I knew Anand sir had academy. West Bay नाम मुझे पता नहीं था. Beast Chats hasn't subscribed to your channel. Beast Chats भाई ये क्या बात है यार? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, इससे ज़्यादा तो दिन की सुपर चैट आती है साहिल टिकू भाई को. कुछ भी भाई, कुछ भी. Yeah. Okay. Ha. I've heard of it. Now that you put it together, no. West Bijan Chess Academy, Vyaka, I've heard of it. हाँ. मुझे याद, मैंने पूछा था. ये तो मुझे वो वांकेड स्टेटमेंट की याद ला रहा है. हाँ. Now I remember it, I think. बहुत टाइम पहले सुना यार. I don't know. कल खाया क्या चीज बर्स्ट? बस कल नहीं खाया. I'll have it later. I think मेरे कजन आने वाले हैं आज बीच में. आज या कल मैं खाऊंगा. Let's see. Nihal का मैच ड्रॉ हो गया. It's only been a draw. They have agreed to a draw. Arjun's game will also be a draw most likely because rook behind the pass pawn. So the game that's going to decide everything is Chidambaram against Leon. आनंद ने बोला था सीवीएच स्ट्रीम में. हाँ एग्जैक्टली, मैंने सीवीएच स्ट्रीम में देखा था. हाँ फॉर श्योर. आई हैव हर्ड अबाउट दैट ऑन सीवीएच स्ट्रीम. याद है, क्या याद है भाई? आई एम ईटिंग समोसा लास्ट 3 days. Lamasa is love. That is true भाई. By the way, my मेरा विक्स हैव रन आउट यार. माय विक्स हैज रन आउट. मैंने विक्स लाने के लिए मैसेज किया. अर्चित भाई ने 1000 रुपए भेज दिए. थैंक्स अर्चित भाई. भाई विक्स 1000 रुपए, इतना केयर मेरे विक्स का भाई. 1000 रुपए का नहीं है भाई. थैंक्स अ लॉट यार. थैंक्स अ लॉट मैन. सुपर चैट तो आती है भाई. थैंक्स अ लॉट रेवन एक्स भाई फॉर द 100 रुपीज चैट भाई. थैंक्स अ लॉट भाई. मुझे चाहिए विक्स था भाई. पैसे मिल रहे हैं भाई. क्रेजी है यार. थैंक्स अ लॉट यार. थैंक्स अ लॉट मैन. अजीत भाई थैंक्स फॉर सपोर्ट मैन. इट रियली मींस अ लॉट. एंड लेवन एक्स भाई थैंक्स अ लॉट मैन. मैसेज के साथ चक्कर का नाम भी पढ़ लो. कॉन्टेक्स्ट कभी याद नहीं रहता आपको. अच्छा चैट माय थ्रोट इज टोटली डन बाय द वे. आई थिंक 3 से 9 घंटा स्ट्रीम कर रहा हूँ. कल थोड़ा कम था. सो आज आखिरी 9 घंटे की स्ट्रीम है. सो इफ माय थ्रोट करने तो मुझे माफ कर देना भाई. बाय द वे चैट, ही इज कंप्लीटली विनिंग नाउ. I think मैंने एक दो मूव मिस कर दी. Queen takes f3 is completely winning. The king is bare. Rook is coming to e1. Rook is coming to e6 if the knight moves. Bishop g4, just even trading queens is completely winning for white. He has too many pawns. He has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Black has 1, 2, 3, 4. So basically rook and 3 pawns for 2 pieces. That is just too much. That is too much. Only 48,900 to go. Nice. Respect boss. Thanks a lot yaar. Nihal has drawn chat. He has drawn. If Vishisar wins, you have to tweet you are better than Anish Giri. यार अनिश गिरी मुझे फॉलो करता है ट्विटर पे, ठीक है ना. सो आई डोंट वांट हिम टू अनफॉलो मी. बड़ी मुश्किल से फॉलो किया है. इतने सारे मैंने क्लेवर ट्वीट्स मारे डेली बेसिस पे, तब जाके अनिश गिरी हैज फॉलोड मी. आई डोंट वांट हिम टू अनफॉलो मी, तो लेट्स नॉट डू दैट. हाँ 40 लाख का सब टूर्नामेंट करा दो, फील आ जाएगी. हाँ भाई 40 लाख का ना. सही बात है. इतने तो मेरा है ही भाई. बहुत 40 लाख बिल्कुल. Well done. By the way, I think now it's time. Chat question for you. यहाँ पे तुम what's White's plan? White का main trump card यहाँ पे क्या है? बताओ chat. What is White's main trump card in this position? Come on chat, बताओ. Will you come for chess-based India originals? Asim bhai, the thing is, I don't think I have any reason to be there. It's Saga-wise event. There is no reason for me to be there, so I'm not sure. But I'll be there for the Olympiad, so I'll probably be in Chennai though. H pawn, so exactly it doesn't matter कौन सा पास पॉन आप चूज करते हो. मोस्ट लाइकली दीज पॉन्स, सो योर ट्रम्प कार्ड हैज टू बी द पास पॉन्स. सो ये सब इनको बैठे रहने दो. इनको चाय पीने दो यहाँ पे, पेपर पढ़ने दो मॉर्निंग का. हम यहाँ पास पॉन क्रिएट करते हैं. लेट्स विन द गेम. सो वी कैन प्ले h5, एक्सचेंज दिस पॉन, और इवन g4 h5 क्रिएट पास पॉन. बस पास पॉन क्रिएट करना है भाई, एंड द गेम इज ओवर. एंड यहाँ से भी कर सकते हैं बाद में आगे जाके. द मेन ट्रम्प कार्ड is Tiku watching the game. नहीं भाई. Okay, he gives a check, king f6 now, I think. And then he can also play f4, yeah? f4, king f3, g4, and then that should be over. f4 looks very logical to me. Preventing g5, f4 now. Very logical. If he doesn't play f4, I'll be very surprised. अगर f4 नहीं खेला उसने तो. Yeah, Sanjeev bhai, exactly. For professional chess coaching, is there demand more or supply more? I'm not sure because मेरे केस में क्या है, I've always kept like 1 or 2 students at max, 2 3 like बहुत साल पहले ज़्यादा थे, अभी कम है because I don't have much time. But I would say कि pandemic के time पे demand was 0. So I'm not sure how chess players managed during the pandemic. It would have been a very difficult time in 2020 में. But usually it's kind of balanced. मतलब but the thing is, कोच के केस में क्या है कि आपकी रेटिंग 1500 फिडे है या 2200 है. It doesn't make a much difference in terms of because maximum audience सीखने वाली lower rated होती है. एंड
coaching is good for people who have at least a GM title, I feel. उसके below उतना कुछ I am at least. Naked आ गया भाई, बढ़िया. भाई बॉट को आने दो, प्लीज स्ट्रीम ओलंपियाड. आई विल स्ट्रीम ओलंपियाड भाई, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज आई थिंक चाहे हमारी वॉचिंग उस टाइम ना भी आए, बिकॉज यू नो समय स्ट्रीम कर रहा होगा, सागर शाह स्ट्रीम कर रहे होंगे, आई विल स्टिल स्ट्रीम भाई. क्या नहीं हूं मैं हिकारू के बगैर बस एक चीज करनी है भाई, होर्स डालो an arrow. That's all you need, man. Can you sell a piece to get 2 pawns or it will still be lost? अगर पीस दे दोगे तो भाई फिर खत्म है ना गेम. I will be exchange up. So you can only choose your poison, but you will die as black in this position. Main trump for black is that Aravindh is playing Tikku's moves. I mean, I am playing decent moves today, so I don't think it will work. विशी का मैच कितने बजे है? 8:30 बजे भाई, 8:30 बजे चैट, 8:30 बजे. सब लोग अपने दरवाजे लॉक कर लो अंदर से. घर पे कोई आए चाहे घंटी बजाए, खोलना नहीं. चाहे गर्लफ्रेंड कॉल करे, घर पे अकेली हूं, रिस्पॉन्ड नहीं करना. चाहे बॉस कॉल करे, अगर आज नहीं आया तो फायर्ड, उसको बोलो यू आर फायर्ड, बिकॉज आज विशी वर्सेस कार्लसन है. इट्स गोइंग टू बी एन एपिक मैच. स्टैंडिंग्स भाई दिखाएंगे भाई, स्टैंडिंग्स ये बता दो. फॉर नाउ चैट, निहाल इज ऑन टॉप. इफ अरविंद विंस ही गेन्स द सोल लीड भाई. लेट्स गो. नाउ आई थिंक इफ आई वाज वाइट आई वुड प्ले बिशप d3. आई वुड प्ले बिशप d3 anyway, and then f4, king f3, g4, and then h5, and then have 2 passed pawns on the f and g files, and that should be enough to win. बस हो गया. आज संडे है, सबका ऑफ है. अरे हाँ संडे है, फालतू में मोटिवेशन दे रहा भाई. पहुंच जाना भाई फिर तो 8:30 बजे एग्जैक्टली. Why Gukesh is not playing? अरे यार सर फोड़ लो मेरा. Gukesh is not playing because he is busy on a Sunday भाई. अरे f3 क्यों यार? Why not f4? Okay, he's playing it safe. But I would have played f4 man. बॉस को बोलो you are fired, that got me rolling. Of course भाई बोलना पड़ेगा ना यार. I mean देश को सपोर्ट करना है कि बॉस को? Okay, black is still holding on for some reason. अर्जुन गेम देखते हैं भाई. ओहो भाई किंग पूरा ने पूरा यहां तक ले आया, बट इट विल स्टिल बी अ ड्रॉ. किंग इज कट ऑफ, सो अर्जुन विल ड्रॉ दिस गेम. चैट स्ट्रीम लाइक कर दो भाई, कम ऑन, लेट्स गो टू 400 लाइक जल्दी से भाई. एंड इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. इज दिस टर्निंग ऑफलाइन और ऑनलाइन? ऑनलाइन यार. 8:30 बजे पहुंच जाना अगर लाइफ में कुछ करना है. एग्जैक्टली साले गला खराब है. इन शॉर्ट ही ओके. 7x भाई, you know luckily आपने सुपर चैट वाले मैसेज ये नहीं लिखा, तो मेरे को बोलना इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी टू स्पीक इट आउट. बच गए भाई. बट आई गेट योर पॉइंट. फ्यूजा का डेट कैसा गया? फ्यूजा का डेट पता नहीं यार, पता नहीं फ्यूजा खेलता क्यों नहीं आजकल. बहुत बिजी आदमी लग रहा है. इट्स लाइक मतलब वो किसी ने बिग बैंग थ्योरी का एपिसोड देखा है, जब देयर इज लाइक दिस किड हु इज इवन स्मार्टर देन शेल्डन, एंड देन उसके बाद व्हाट दे डू इज दे बेसिकली आस्क हिम टू डेट अ गर्ल, एंड फिर वो लड़कीबाजी में लगाता है, एंड वो अपना पूरा करियर छोड़ देता है. आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबॉडी माइट बी डूइंग टू फिरोजा. दे आर लाइक तू वर्ल्ड नंबर 2 हो गया, तू भाई छोड़ना लड़की बटा यार. दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग. Which is better for Blitz, online or offline? I mean, it's obviously online for Blitz, yeah, but I'm not sure I enjoy online as much as OTB. OTB is always the best. Yes, याद है, exactly है ना. I think वही हालत फ्यूचर की ना हो जाए भाई. गुकेश सबको पे लेता है. गुकेश खेल ही नहीं रहे भाई. Excellent job, bro. Replying everyone, calculating simultaneously. Really appreciate. Thanks a lot, वशितुल भाई. फ्यूचर तो को अभी मजा नहीं आ रहा चेस में. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके मजे कहीं और टिके हैं. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू नो f4 खेलना चाहिए, बिकॉज इफ बिशप आके बैठ गया यहाँ पे, एंड इसको अब यहाँ से गोद से निकालना बड़ा मुश्किल है. दैट्स द इशू. लिटरली गोद लग रही है मेरी. लाइक यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरी गोद है, और ये बिशप बैठ गया आके. दैट्स द इशू मैन. लाइक आई शुड हैव प्लेड f4. I am 1000 rotate rapid. Is beginner course best for me or foundation course, Keshav bhai? 100%. Beginner is not for beginner. Is for people who don't know the rules. Foundation course will get you to at least 200-300 points. You will gain if you complete it every single day. Fuja will make a comeback as it was doing what? Tikku after becoming I am. छोड़ो भाई ये GM VM छोड़ो, लड़की वाली करते हैं. I think lack of practice will hurt Fuja and challengers. The same case with Raja as well. I have to agree. Exactly, man. Exactly. Have you heard Howard Stern's statements on the Bote sisters? I haven't. क्या बोला था यार? What did he say? Anand se Carlson on Sunday, just like India's Pak cricket match organized on Sunday for more audience. Yeah, but I don't think Norway just was like कि कहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा देखेगी, जरा संडे को रख देते मैच. I don't think so. That's the reason.
चिदम्बरम में कस्पारोव आ गया है. फाइनली ही गेट्स किंग G3. फाइनली F4 खेलेंगे भाई. फाइनली ही कैन विन नाउ. बट अब वो G4 में बैठेगा भाई. क्या टॉर्चर है रे. मैंने कहा था पहले F4 खेलने का. I entered stream. What are the updates? भाई फिलहाल के लिए Nihal has drawn his game. That means Nihal has gone to chat. Anybody joining in? एक अपडेट ठीक है. आज के दिन से पहले Nihal and Chidambaram were leading the event with 25 points. Leon was on 22. ठीक है ना? Now Nihal drew his game and Chidambaram is winning against Leon. So Leon भी पीछे रह जाएगा. Chidambaram wins and Chidambaram will go to 28 points. If he goes to 28, it will be very difficult for Nihal to catch up, and he might just win this tournament and get a chance to play one tournament, CCT tournament, and gain some huge prize fund and gain a lot of recognition. And he's been so good at the National Rappel and Blitz tournaments for years now, and he totally deserves it. But he still has to finish Leon off. Leon is trying to hold on the dark squares. It's not so easy. He's not allowing any open file entry square for the rook. You can see how the rook does not have e6, e7, e8. e5 is not the same as e6, e7, e8. Young Sheldon मैंने नहीं देखी है. एक दो एपिसोड देखे थे बस. Arjun games that draw हुआ यार. Arjun is behind. Arjun is ranked 6th right now. He cannot come first in this tournament. But luckily for him, he has already qualified. For the क्या बोलते हैं उसको, for the one event in CCT, so he's fine. भरत सिंह was removed from ASF. क्या बात कर रहे हो तुम? वो टेम्पररी है ना भाई, टेम्पररी था. Future said that कोई भी competition नहीं है. Unless Tiku becomes GM, he will retire. Yeah man, Future, you'll have to wait man. Wait कर थोड़ा. Wait कर थोड़ा. आऊँगा. I can say. Aravindh also plays in the World Cup, right? Yeah, he plays in the World Cup. He's very good, man. He's very, very good. I think he got knocked. I think he even defeated or got knocked out by Michael Adams, I think, in the World Cup. I don't know if I think he knocked out Michael Adams. He's very strong, man. He's very strong. Why can say है अर्जुन? Yeah, true. भाई मेरी फोन पे स्ट्रीम की बंद हो गई भाई. Somebody has hacked. This is the last chance to qualify. Yeah, not the last chance, but इस tournament के बाद I think 1.5-3 महीने बाद chance मिलेगा. So I think in this tournament, this is the last chance for them to qualify. And Nihal also needs that chance, yeah, because Prag को मौका मिल गया and Prag ने Ding को हराया, Carlsen को हराया, कितना publicity मिली. And I think Prag only became famous because he defeated Carlsen in the CCT tournament. So these players know what are the stakes. It's not just prize fund, it's a chance to defeat these top players and get a chance of that crazy recognition, yeah. फ्यूचर बोलता है चेस के लिए साहिल से जीतने के लिए ये क्या है. बाय द वे अर्शिमा ने बताया क्या कि उसने क्या बोला था उस बंदे ने. अच्छा वो नहीं बताया. अरविंद विल मोस्ट लाइकली विन दिस टूर्नामेंट. Indeed, man. And now Nihal will have to win the remaining 2 games to have any chance, and that's not easy. फिलहाल के लिए, of course, F5 I think is the best try. And then you hope for the best that it's winning. But black for now is holding. He's not allowing to. I think C4 pawn push karna padega. You need a pass pawn from somewhere. Maybe black will also go B5 to prevent this. Also possible. But then if B5, then you have rook A1 and A4. If B5, then rook A1 and A4. And you can still open the A file. Yeah, he bet Michael Adams. Exactly, yeah. So he's also very strong, man. अनिश गिरी को भी हराया. या प्रग ने कितनों को हराया यार. How much recognition he got from that and how much money he earned from it, how much fame he got from it, it's just unimaginable. Sachin Telkul tweet किया, मोदी ने tweet किया. So Nihal and all these guys, Chidambaram for example, it could mean the world to them as well to get that recognition. So I think there's a lot at stake apart from the money and apart from the tournament. It's more about the popularity you can get, yeah, मतलब by defeating these top players. सीरियसली बता क्यों नहीं खेल रहा गुकेश. अरे मैं बताया तो उसका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था भाई. He could not play on. He was playing from somewhere outside, not his home, and he could not get proper internet connection and he had to withdraw. बार डांसर अवार्ड गोस भाई. वो बार डांसर अवार्ड ना वो चेसोकॉम की गलती है भाई. बार इक्वल ही है. वो चेसोकॉम फालतू में नाच रहा है फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई इज डांसिंग अराउंड. द बार इज एक्चुअली इक्वल. इक्वल मतलब सेम पोजीशन में है. व्हाई इट इज बेटर. Bishop here possible to have, but the thing is once you capture on h5, that allows my f5 pawn to run. What black is trying to do, he's trying to hold in this position. वो pawn तो तुम मार लोगे, but जैसे तुम वो pawn मारोगे मेरे रुक को entry मिल जाएगी and then when I win the game. So he's trying to get a fortress. Exactly. Is white playing this too slowly? No, I think he's taking his. I think this is fine because होता क्या है, जितना देर you drag this,
उतना probability बढ़ती है black will make a mistake because black has to be accurate on every single move. White only needs to strike once. एक बार रुक को एंट्री मिल गई, it's over. So black needs to be accurate on every single move. जितना ड्रैग करोगे उतना चांसेस है गलती होगी. See, he's playing rook e2. He's not hurrying. Yeah, he's not hurrying. He's taking his time. He's waiting for black to make a mistake. And you know what you want is to push the pawn to h6. If it's possible, you will win the game. That's finished. Who is leading the tournament? Bhai, right now, Chad. It's I think it is I think it's Nihal. But if Chidambaram wins, he will lead then. Yeah, c4 should be a winning plan as well. I think if you have a pass pawn, that should be winning. But the thing is, c4 के बाद I think black takes and you take, and then the a5 pawn becomes weak. So it's still not completely clear because if I take c5, there is king to d5, and I still don't get that open file. You will have to probably play d5, but d5 के बाद c5 can be a weak square. So I'm still not sure how is he winning this. Let's see. Does Arjun have a chance to win? No, he has no chance. रौनक की 2 हाँ वो थोड़ा क्रॉप गलत है भाई. रेटिंग इज डज नॉट मैटर यार. नाम मैटर करता है, इवैल्यूएशन मैटर करती है. आई थिंक इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जो भी हमें दिख नहीं रही है फॉर सम रीजन. 13 राउंड. या and pawn moves are possible, so no draw in sight. Yeah, see, he plays and he blundered. I think he'll take on c4 and black has blundered, and now white finally gets what he wants, a pass pawn c5 here, and black resigns. He can take and also play c5, and this is why you drag it as long as possible ताकि maximum chances दो opponent को गलती करने के लिए. यहाँ पे black had to take. It was very obvious, even to me surprisingly, कि मारना जरूरी है because you need one of these squares for your king. And now c5 just creates a pass pawn. In fact, 2 connected pass pawns, and that should be game over. That should be just game over. And black का अरे did he take or did I take? That should not be a good move. Of course I took. And after, oh, he did not take. He did not take. मार भाई. अरे खेल c5. खेल क्यों नहीं रहा है? बाबू को बोलो सब्सक्राइब करने को यार. Before black push, what if white plays f5? It's not a big deal. You can play f5. It doesn't change matters too much. Why is he not pushing c5? Because chat, ये जो pawn black का pass pawn आएगा, it will be controlled by the bishop. So black is not going to have any counter chances. I've been playing hard to get. I don't know, man. You know, the girl is now really. See what happened? He got him. He got him without any risk. Yeah, maybe he was the smarter guy. And now you just take on here, take here, and play rook to h1, and black resigns because ye pawn is not important. This pawn is indeed important. And black panicked. He should have held on like this. Usko hold karna tha. Black could not hold on. And now rook d1 is a passive move. Rook h1 was winning on the spot. But now you have these pawns, and now just king h4 and king g5, and then f5, and it's over, chat. It's resigns. And also b4, if the bishop moves, then b4, and if this bishop moves, then also b4, c5 maybe at some points. Also rook e1, by the way. So yeah, just d5 now maybe. Anand for candidates indeed. आज तो वो crazy match होगा भाई आंसर का यार. क्या I don't know if it's possible logically to have it, but I genuinely have goosebumps for the match. Yeah, I don't know if it's possible to have them. Maybe it's like my mind tricking me, but it is like I genuinely feel goosebumps for that match. रौनक की गेम में क्या हुआ भाई? रौनक की गेम, I think he won the game. Knight to d7. Knight तो है ही नहीं भाई, अब knight तो गया. रौनक won his game, chat. He won his game, but against another guy, but not enough to still take the lead. King e3, good move, defending both his weaknesses. And now, chat, rook g1 or rook a1, both should be easily winning. Open file चाहिए, open file मिल गई. Thanks Satya for the kind words. Has Zugzwang, yeah, I think here you don't even need Zugzwang, just rook a1 or rook g1. Both moves should win on the spot. Rooks need open files. If you can get open files, you're winning. Is today a match? Yes, exactly. So भाई आज है भाई, आज crazy match है यार. आज के लिए तो भाई पूरी hype है because Vishy and Carlson are leading the tournament and both are playing together, and Vishy has the white pieces. Rook a1, yes, see, he goes rook g1, bishop defends it, and now rook a1. See, थोड़ा बहुत चेस तो मुझे भी आता है भाई. And now you can start playing even rook g1 and rook g6 also possible. You can also play d5 to get a pass pawn. You can also play b4 c5 to get a pass pawn. कितना taunt कर रहा है ना rook a2. Normal chess, exactly. Wesley did not lose a match till he's third. Yeah, but the thing is, he did not win many games in classical, right? Vishy won 2 games in classical. That means a lot. यो साधक भाई क्या हाल है? खुश क्यों हो रहे हो? निहाल के चांसेस कम हो रहे हैं.
भाई मैं तो विशियांत के साथ खुश हो रहा हूँ, निहाल के साथ कम हो रहे हैं, बट आई थिंक चैट, आई मीन इट्स लाइक if Chidambaram wins, he deserves it. Yeah, he deserves it. He played some excellent chess. In fact, the only guy he lost to was actually matlab Aradhya Garg. Yeah? So Aradhya Garg is not the guy he should have lost. So it's very obvious he's played the best chess in this tournament. There's no doubt. Who is leading right now in this tournament? Right now it is Nihal with 1 point. But if White wins, which he is completely winning now, for example, Rook to G2 and then push the H pawn, in that case, Chidambaram will lead by 2 points. बार का अलग है भाई, देखो बार का नाम बार क्यों रखा है इन्होंने, there is a reason for that. So I think you can understand. कल भी निहाल से अर्जुन है, एग्जैक्ट कल भी है निहाल से अर्जुन भाई, कल अलग ही है, बट आई थिंक वो 9 बजे से क्लैश करेगा, so we'll not be able to cover it exclusively, so we'll cover it like साथ साथ थोड़ा बहुत. यो संगीता, how are you? बढ़िया हो यार. हाय वीकलिंग्स, ये लो भाई हमारे बॉस भी आ गए हैं जिन्होंने आज तक मतलब एक 1500 को हराया नहीं है, और यहाँ वीकलिंग्स बोल रहे हैं लोगों को. उसका तो गुकेश वाला गेम भी कैंसिल हो गया. अरविंद, या एग्जैक्टली, he also lost 2 points because of that, so he definitely deserves the win if he wins this. So he's played an excellent tournament. Excellent tournament. आज होप्स बहुत हैं क्योंकि बोथ आर इन गुड शेप, बट इफ आनंद विंस एक इंस्पिरेशन मिलेगा. इंस्पिरेशन तो मिलेगा ही भाई, एंड हु नोज, ही माइट डिसाइड टू प्ले द ओलंपियाड. लाइक आई स्टिल हैव दैट होप कि कहीं ना कहीं ही विल प्ले द ओलंपियाड. आज फुल सपोर्ट टू मैग्नस इंडीड. अरविंद ऑल्सो लॉस्ट टू हर्षा बाय द वे. या ट्रू. ज्यादा मत गेस करो, आपकी मैं आपका गेम भेज दूंगा लेवी को, आपकी बेइज्जती हो जाएगी. भेज दो भाई, तो हम डरते हैं क्या? हाँ, हम डरते हैं क्या? तुम भेजो ना यार, भेजो ना यार. What is the significance of this tournament? Any agreeing to other invites? Indeed, first of all, chat, there are huge prize money involved. By the way, nice move, yeah. Bishop takes and now rook h8 wins one of the bishops, and black will resign. First of all, it is chat ki matlab jo jeetega he gains a lot of prize money. That's first thing. Second, of course, you get invitation to main CCT event. You get to play against Carlson and all these guys. Jahan se Prague actually famous hua hai, so you get this popularity if you defeat many top players. And then, I mean, you get a lot of fame, right? Because you play against Ding, Anish, Carlson, and all these guys. And now King C6 and Rook D6 is the finish, so that's why he resigned. And with this, Arvind Chidambaram has taken sole lead in this tournament with 28 points out of 36. Nihal Sarin 2 points behind. Raunak is 5 points behind. So there is literally mathematically almost impossible that Raunak will catch up now or Leon will catch up now. That means only 2 players have a chance to win this tournament. Aravindh and Nihal. It's going to be a race. The next round has already started. We go to the game of Nihal, Sarin, Karthik and Murli, and then we go to the game of Chidambaram against Vesakanar. Chidambaram has a slightly easier opponent, but let's see what happens. सागा की आवाज डिफरेंस क्यों लग रही है और फेस भी? Will you be commentating on the Vishy Carlson match? Exactly भाई, सागा की स्ट्रीम ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है भाई. ये कौन है कार्लसन को सपोर्ट कर रहा है? कौन है भाई कार्लसन सपोर्ट करने वाला? कौन है ये? It will be good to see Aravindh get some recognition. He has been in the silence for too long. That's true, man. That's true. Exactly my point. Nihal has to hope Aravindh loses, draws one game. Yeah, not even draw actually, because even if draw would work, but draw pe basically Aravindh go to 29, and even if Nihal wins, it will only be a tie. And as far as you only mentioned Chesji bhai ki tie break mein I think Chidambaram is ahead. So what he really wants is Chidambaram to lose, and that looks very unlikely considering the form he is in. भाई मेरा chat पढ़ लो please. पढ़ रहा हूँ भाई वाटिका जी. Nihal's next match is right now. I think his game will start a little. Chidambaram will start a little late. Nihal की पहले start होगी. Let's see Nihal against Karthik and Murli. Anisha होगी. Arvind deserves this. Yeah, he deserves this. But it's not over. It's not over, Chad. Not just yet. Gukesh is not playing by. Hope no choking from Aravindh. I don't think he's into BDSM, right? I don't think so. So you mean okay? Yeah, true. That's true. I hope so too. Table change कर दो. अरे हाँ भाई, table change करते हैं भाई. Round 14 आ चुका है. अरे टिक्कू रुलाएगा क्या? आनंद will not be Olympiad. यार अब देखो ना यार, अभी तो खेल नहीं रहे यार. हम उम्मीद कर सकते हैं खेलेंगे. We can only hope कि he will play, right? We can only hope कि he will play. That's our dream. कि he will play the Olympiad. यार वही सपना है हमारा. आज खुद देखो यार, मतलब कितना हाइप है यार कार्लसन गेम का है, to be honest. अच्छी गंदा जोक. Great was for covering Indian chess. Thanks a lot, Kumar bhai. Why it can't be said about Aravindh Gaurav? Who's Aravindh Gaurav?
How many games left for you? 2 games left, chat. 2 games left. Will be a draw. If Nihal draws this, he cannot win. He cannot win. If Nihal draw this, he cannot win the tournament. So he has to win now. भाई टीवी पे लगाया है भाई, तो ऐसी गलती क्यों करते हो टीवी पे लगाने वाली? जो भी टीवी पे देख रहे भाई, क्यों? Why are you making such a mistake? पिज्जा पार्टी नहीं थी आज, आज शाम को कर सकते हैं भाई. अगर आज विशी सर जीते तो आज पिज्जा पार्टी करेंगे भाई, कंफर्म. इफ वी सी विशी हैज अ बेटर पोजीशन, we'll do a pizza party today, confirm. Who are Nihal and Arvind's final 2 opponents? Nihal is playing, I think, stronger opponents than Arvind, so Arvind has a better chance there as well. But Nihal is also slightly stronger, so it could balance out. साहिल बी केयरफुल, अविन से माइनर जेल हो जाएगी, पास्को हैक भाई. बीडीएस में बोलने में क्या इशू है भाई? बोलने में क्या इशू हो सकता है? ये जीतू है कार्लसन का सपोर्टर, बैन करो उसको. भाई ठीक है, लेट हिम सपोर्ट कार्लसन. कोई तो दूसरे साइड का भी कोई होना चाहिए चैट में. चैट मिस डोमिनोज और पिज्जा हट. यहाँ का पिज्जा हट ना इज हॉरिबल. उसके रिव्यूज आर लाइक 2.5 ऑन स्विगी. It's just horrible. I once ordered on stream. I think अर्षित भाई आप भी थे तब, पता नहीं बहुत टाइम पहले की बात है. 2.5 घंटे में पिज्जा आया नहीं. So Domino's is the only one which delivers here. Verbal abuse. तो if I say XYZ person is interested in BDSM, that's verbal abuse. अच्छा. Nice logic there by the way, शशांक भाई. Anyways, विशी का मैच कब है? विशी का मैच 8:30 बजे यार. जोमैटो बोलो ब्रांड वर्क मिलेगा भाई. बिना ब्रांड वर्क मिले कैसे बोले भाई जोमैटो? एनीवेज आई डू ऑर्डर ऑन स्विगी. सो हु इज विशी प्लेइंग टुडे? विशी प्लेइंग कार्लसन यार. टेस्ट में डोमिनोज बेटर. आई एम नॉट श्योर यार. आई डू लाइक द चीज बस पिज्जा. आई हैव नॉट हैड टू मच ऑफ पिज्जा हट. आई हैव हैड मोर ऑफ डोमिनोज, एंड टू बी ऑनेस्ट डोमिनोज इज बेटर बिकॉज चीज बस है. दैट्स इट. दैट्स द वन डील आई थिंक इज मेक्स डोमिनोज बेटर. अच्छी जगह पिज्जा हट इज गॉडली. अच्छी जगह यहाँ है नहीं ना भाई. यहाँ अच्छी जगह है ही नहीं भाई. वो थोड़ा टेस्ट के साथ डिलीवरी नहीं होता भाई, डिलीवरी नहीं होता. एनीवेज चैट, the game should start any moment. Let's see. Chat, do like the stream by the way. Let's get to 400 likes, and if you're here for the first time, do subscribe to the channel guys. भाई इंटरव्यू डैश आया यार, मतलब अच्छा इंटरव्यू था क्या? अरे भाई ध्यान रखो यार अच्छे से. तो यार मैच कब स्टार्ट होगा? अभी की अभी, इन अ कपल ऑफ, आई थिंक इन अ फ्यू सेकेंड्स. विशी गेम 8:30. तो फरीदाबाद से शिफ्ट हो जाओ ना. फरीदाबाद में क्या रखा है? कंप्लेंट कर रहे हैं भाई. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा भाई. इट्स ऑल फाइन. डोमिनोज डबल चीज मार्गरीटा इज माय स्टेपल फूड, जस्ट टू गुड. स्टेपल फूड या कुमार भाई, लगता है आपके और मेरे तमीज की हालत सेम है फिर. सॉरी नॉट अथर्व भाई. साहिल भाई, विशी विंस आई विल स्टार्ट वर्थ 5K. नहीं भाई, इफ विशी आनंद विंस दैट्स मोर देन इनफ डूड. लाइक चेस का कितना ट्रेंड हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा भाई. दैट इज मोर देन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड भाई. आप ही हो जाओ. ऑलमोस्ट सारे चैट्स पढ़ते हो. आप ही हो जो, अच्छा आप ही हो. अरे थैंक्स लॉट यार MIK भाई, मिक भाई. क्यों ध्रुव? नॉट इंस्टेंटली बट प्रीटी फास्ट इंस्टेंटली. आई एम नॉट एबल टू डू पजल्स. व्हाट टू डू? आदित्य भाई तो जैसे को हम पजल्स पे जाओ ना यार. इफ यू नॉट लाइक कीप सॉल्विंग देम. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, कीप सॉल्विंग देम. एक महीना सॉल्व करोगे, अगले महीने और बेटर होगा. यू विल स्लोली इंप्रूव. पजल्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता है भाई. इट्स लाइक यू नो trying to analyze quantum field theory when you have not even studied E equal to MC square or even F equal to MA, but slowly it comes to you. It's a matter of practice. इतने ज्यादा चैट है नहीं, इसलिए पढ़ता है टिकू सारे चैट से यार. I'll try my best to read most chats by the way, regardless of the flow. Okay, they have not started yet because 4:30 का मैच है. दे शुड स्टार्ट राइट नाउ राइट. किसका क्या डिले है भाई? ओ अच्छा नहीं, गेम तो खत्म हो चुकी है, फिर क्या चक्कर है भाई? क्या हुआ भाई, किसी को छींक आ गई क्या? आज जो कार्लसन को सपोर्ट करेंगे उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर देंगे. नहीं भाई, देखो चैट होता क्या है. Sometimes when you know you're having a debate, if there is nobody from the opponent side, people say ये कैसा डिबेट है, यहाँ पे तो कोई हमें रिकॉग्निशन नहीं है. मतलब इट्स लाइक यू नो men in politics deciding what women should do with their bodies, like kind of similar. So अच्छा है कुछ कार्लसन के लोग भी हो ताकि we can actually debate properly कि how why Vishi is better. Can you suggest some good books for chess? I would suggest depends on rating man. Deep depends on rating. I don't know your rating actually. Rating बता दो. विशी का इंटरव्यू ले लेना भैया. विशी सर कहाँ आएंगे चैनल पे यार? I don't think so. इतना बड़ा चैनल तो नहीं है हमारा यार. नींद आ रहा है भाई. संडे को लंच करने के बाद
नींद नहीं आएगा तो क्या आएगा रे? क्या आएगा फिर? कब स्टार्ट होगा? अभी होना चाहिए यार. Why is it not starting? I don't know why are they not starting. It should start any second. I am 2059. भाई अच्छी खास रेटिंग तो है यार, क्या चक्कर है? Keep solving it. दीप्ता है रेटिंग फर्स्ट. कार्लसन इजीली जीतेगा. जीतू भाई बिल्कुल पूरा सपोर्ट करो भाई. रिलैक्स बॉयज. कार्लसन सपोर्टर्स बस जिंक्स कर रहे हैं. यस. How many legs will each player be allowed to play? Basically, you play one leg, and if you basically come in top 8, then you get to play another one. As simple as that. Cricket खेलें? खेलो भाई. बाइसेप दिखा दो. रुको यार, बाइसेप दिखाते हैं यार. ऑन डिमांड है तो कुछ दिख रहा है क्या बाइसेप में? Is it visible? I don't think so, right? Yeah, साला when you have some muscle but you also have some fat, तो बाइसेप दिखता नहीं है. That's the main problem. That's why you need to be shredded. Yeah, it's not visible. ये लेक्स से मुझे डार्क जोक मुझे भी आया था यार. I avoided it भाई. I avoided any dark jokes. Just let's avoid dark jokes. What is the standings? These are the standings, chat. Aravindh is on top. Second is Nihal. यही दो लोग बचे हैं जिनका I think जीतने का चांस है. And they are not starting. I don't know why. किसका इंतजार है भाई? I don't know why they're not starting. क्या हो रहा है यार? ये क्या चक्कर है? What's happening? Why are they not starting the game? Arnold Tikku. अरविंद का ड्रॉ और निहाल का विन तो बहुत मजा आएगा. Indeed, man. But I think कि somehow निहाल का मैच बहुत डिफिकल्ट है ना. ब्लैक पीसेस अगेंस्ट कार्तिक इन मुरली, बराबर का प्लेयर ऑलमोस्ट. वहां वो वैसे किनारे से खेल रहा है. हु इज वन ऑफ द वीकेस्ट प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट. वीकेस्ट मतलब जीएम है बट वन ऑफ द वीकेस्ट हियर. सो निहाल का थोड़ा आसान काम है यार यहाँ पे. चिदम्बरम का थोड़ा आसान काम है यहाँ पे. आनंद विल लूज कार्लसन इन अनबीटेबल इन क्लासिकल चेस. पॉल जी भाई हम नहीं जीतने कार्लसन को. विशी हैज द वाइट पीसेस, ही विल विन. सबका बदला लेगा रे विशी आज, देखना तुम. Vishy to Carlson, बाप तो बाप होता है. Nihal will have black against Raunak in the last round. Aravindh is winning this. Yeah, exactly. Nihal के लिए आसान नहीं है भाई. It's not easy. It's not easy at all. रुको भाई, मेरा विक्स आ गया. रुको एक सेकंड रुको. चलो भाई, विक्स is here. फाइनली एंड द गेम स्टार्टेड. लगता है विक्स की कमी थी. अच्छा, कितने कंसर्न्ड है ना ये प्लेयर्स. दे आर वेटिंग फॉर मी टू गेट माय विक्स या ताकि मैं गले को स्ट्रेन ना करूं. कितना केयरिंग लोग हैं यार. आई हैव टू से. अरे चिदम्बरम को देखो भाई, ये तो ट्रोल कर रहा है यार. आई हैव पर्सनली प्लेड दिस पोजीशन. आई लॉस्ट हॉरिबली. पता है मैंने ये मूव कब खेली थी? आई वॉज प्लेइंग अ इंटरनेशनल मास्टर एंड मेरा जीतने पे नॉर्म था, IM नॉर्म था, और मैं बेवकूफ आदमी ये खेला वहां पे. मैं ये बेवकूफों की तरह ये खेला भाई. बताओ, इससे घटिया ओपनिंग व्हेन द विन गेट्स यू IM नॉर्म कोई खेल नहीं सकता भाई. ऐसा धुला ना मैं उस गेम में. सो आई डोंट नो व्हाई ही प्लेड दिस. लेट्स सी. ये मुझे कल गेम में आई थी. एग्जैक्टली ये वो बहुत घटिया है भाई. आई थिंक निहाल ने वाइसाक ने बेस्ट ओपनिंग नहीं खेली इसके अगेंस्ट. Did you follow the recent Carlson Giri game where Giri gave up his queen for? Yeah, we followed it on stream. भाई क्या मतलब? I think he just got confused some move order में. He said it in the interview later on. पूरा confused हो गया वो. He just captured it. He thought it was some other line. When was the last time Carlson was in classic? I think last year Norway chess में हारा था. आज मॉड बनाओगे? आज एक बंदे को मॉड लेंगे शाम को यार. Chat, come on, let's see कौन जीतता है. चिदम्बरम against Vaisak. We also have Nihal against Karthikeyan. Both sides have black pieces and both sides are playing with the A pawn for some reason. For now, Chidambaram having the clear lead of 2 points, as you can see, and he also has weaker opponents. He also has one white remaining, so clearly Chidambaram the favorite for now. But can Nihal Sarin catch up? Let's see. ऐसी पेंगो that was way back. उसके बाद भी हारा था वो, I think, against Rapport. Yeah, I don't know against who he lost. Nihal played Candy. Really? Oh, भाई दोनों के दोनों weird opening खेल रहे हैं भाई. ये क्या मतलब डील तो क्या है? क्या तू बेकार ओपनिंग, मैं बेकार ओपनिंग, फिर देखते कौन सबका बाबा है. आई डोंट नो इफ दैट वाज द लॉजिक. यार दोनों बेकार ओपनिंग खेल रहे हैं. एनीवेज, साहिल शाह सागर शाह कौन जीतेगा भाई? सागर भाई स्ट्रांग है यार. लियोन गेम इज नॉट इंपॉर्टेंट नाउ चैट. Unfortunately or fortunately, I don't know, depends on who you are supporting. Now the only games important are Chidambaram and then Nihal. These are the most important games now. Anand Magnus is at 8:30 p.m. chat. Carlson last road to cross to Kalyakin in Norway chess. अरे तभी से उसने ट्विटर इंस्टॉल किया है ना. Didn't Kalyakin start tweeting from like December last year?
ओ माय गॉड, ये कॉन्फिडेंस बकवास करने का उसको उसी गेम से आया क्या? अरे यार कार्लसन भाई, एक ही गेम हारी, दूसरी से हारनी थी क्या तुम्हें? एनीवेज, why did Nihal play previous leg? Nihal was busy, I think, for some reason. I don't know why he was busy. He was not free for that leg. Money heist नहीं देखा मैंने यार. I've not seen it yet. Hey Flowzil, how are you? Aravindh for the win. Let's see, man. G3 played. The bishop go to G2 now, and it will be on a very strong diagonal. So knight to C6 makes a lot of sense here. Knight off में transfers हो गया. Not really the knight off, yeah, because because knight off में usually you have D6 and E5, and knight off में also there's E4. So there's no E4 for now. Not really the knight off, yeah, not really the knight off. I will थोप देखा कार्लसन को. मनी हाइस्ट नहीं देखा हर्षल भाई कह रहे हैं. अरे हर्षल भाई लॉन्ग टाइम भाई, मनी हाइस्ट नहीं देखा है मैंने, स्क्विड गेम देखा था. तो गेस्ट में समय को बुला लो यार, समय फ्री होगा तो ऑफ कोर्स डूड, दैट वुड बी एन ऑनर, बट ही हैज कोविड राइट नाउ. तो लेट्स, आई मीन जीतेगा भाई, जीतेगा, मैग्नस जीतेगा. शर्म आती है कि नहीं? शोभा का बेटा जो भी है, जो उनकी मॉम के अकाउंट चैट कर रहा है. वी can't see Nihal game in the list of games on the right. Nihal's game is right there. Here it is. Nihal playing with the black pieces, putting some pressure on d4. I think his plans to play knight b4, knight d5 maybe. But for now, Karthik and Murli having a better position because he has the center. The bishop on c8 is still bad. And the knight on c6 blocking the c pawn. So I can't counter in the center. Maybe he would like to play e5, but e5 पर d5 आएगा. That's also not so easy. And e5 was also not that convincing either. So queen into not the best move maybe. But still, he's threatening rook at d1, so probably works for him. Maybe knight to d5 here looks okay. Trying to exchange the bishop for the knight, and if he takes, I'll take with the pawn. Then I'm probably equal. Let's go to the game of Aravindh Chidambaram again. पोल डालो मैग्नस. वो पोल मैंने डाला हुआ है दूसरी स्ट्रीम में ऑलरेडी. उस स्ट्रीम में पोल डाला हुआ है भाई. मैग्नस का मैग्नीट्यूड बदल देगा विशी आज भाई. आज कार्लसन को ना, कार्लसन ना लिटरली ब्लिट्स में भी रहा था विशी ने. ऐसे हराने चाहिए विशी सर की, मतलब बस कार्लसन ना थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस हिल जाए भाई, मतलब मजा आ जाए यार. मतलब कार्लसन खुद कहे, कार्लसन कल बोलना चाहिए कि आई विल ओनली प्ले द वर्ल्ड चैंपियनशिप इफ फिरोजा और विशी क्वालिफाई, अदरवाइज आई एम नॉट प्लेइंग. ऐसे पेलना उसको. समय अभी तो 20 के साथ ही इज गुड नाउ. ही इज फाइन क्या? चलो अच्छी बात है यार, दैट्स रियली गुड इफ ही इज फाइन. व्हाट्स ब्लूमेनफेल्ड गैम्बिट? ब्लूमेनफेल्ट, ओके, फेल्ट मुझे पता नहीं है, मैंने फेल्ट सुना है. फेल्ट साउंड्स रॉन्ग यार. विशी वर्सेस मैग्नस अभी से दिल हुम हुम कर रहा है. वाह, गाने भी हैं फ्रॉम किंकी टेल. ओके, बाय द वे बिशप फॉर प्ले नाउ, बट आई मीन आई हैव पुश्ड माय पॉन टू h4, बट देयर इज नो अटैक फॉर ब्लैक, राइट? आई डोंट थिंक सो. If you do play d5, I will not. I mean, I don't think there's an attack for black. In fact, I like white's position here. So for now, surprisingly enough, both Aravindh and Nihal are worse. So it's like दोनों हार सकते हैं. और अगर दोनों हार गए, तो suddenly Raunak might come to 26, and then Chidambaram might stay on 28, and last round में कुछ भी हो सकता है भाई फिर. So far both are worse. फुल डे चिल बी स्टैट समय नाम सवर. अरे नाइस नाइस नाइस. कार्लसन सेज माँ तो डर है? मतलब हैव यू वॉच्ड एनी हॉरर मूवी? भाई आई लव हॉरर मूवीज मैन, आई लव देम. मुझे रात को अंधेरे में ना, मतलब ऐसे एक ऐसे बंदे के साथ मूवी देखना पसंद है जो डरता है. बस क्या फील आती है ना भाई. अगर दोस्त हो 3-4 और एक बंदा खूब डरता हो ना, ओहो सब हग रहे हैं भाई. हाँ हो सकता है यार, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड बाय द वे व्हेन कार्लसन क्वालिफाइड फॉर द कैंडिडेट्स. आई थिंक कार्लसन और क्रैमनिक दोनों के इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, एंड दोनों विन के लिए गए, दोनों हार गए. एंड देन कार्लसन क्वालिफाइड. सो इवन अ ड्रॉ, और दोनों वाइट पीसेस से हारे बाय द वे. सो इवन अ ड्रॉ फॉर क्रैमनिक वुड हैव मेंट कि क्रैमनिक वुड हैव क्वालिफाइड, बट वो विन के लिए गया, हार गया. कार्लसन भी हार गया भाई, और इवांचुक ने हारा था शायद. आई थिंक I'm in love with C4, Bishop D3, Queen C2. Who invented that? वैसे तो यार इन्वेंट आई थिंक किसी GM ने किया होगा, बट मैंने आइडिया दिया था उस GM को. बस दोस्ती यारी में बात हुई थी कि मतलब नाम मतलब ना कोई ऐसा कुछ था. Have you scared someone गलती से during horror movies? भाई मैं भांगड़ फोर्ट की होके अभी आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं डराया नहीं हूँ किसी को. I mean I love, it's not, I don't love scaring anybody, but horror movie मजा तभी है जब कोई एक बंदा ऐसा हो जिसको डर लगता है. इन फॉरेन कंट्रीज नेट इशू वुड नॉट बी देयर. है क्या? वहां भी इशू है क्या ऑस्ट्रेलिया में नेट का? भाई यू ब्रॉडबैंड कहाँ आपने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है यार. इवांचुक मिस मेट इन वन एपिक था. दैट वाज एपिक दो, बट वो आई थिंक रैपिड में था ना.
By the way, I do like white's position, man. I like these pieces. Bishop on e5, bishop c4. This reminds me of the London system, yeah? Matlab, kind of symmetric, kind of similar. Just knight is on c3 and not the pawn. Chat stream like kar do bhai, jaldi se. Let's go to 400 likes. And if you're here for the first time, do subscribe. Let's go. Why no chess openings are being invented anymore? Every possible combinations already done. Probably not. You can for sure find new openings in some variation, but starting se nikalna mushkil hai. Do you use a very strong engine other than Stockfish to prepare line for ramen? No, I have Commodore 10, which is similar to Stockfish. In fact, Stockfish has probability mein dikhata hai. If you buy the latest Stockfish version, it has probability instead of the actual evaluation, which is very difficult to comprehend sometimes if you want to look at lines fast. So in fact, I use the older version, yeah, Stockfish 13, just to have that normal evaluation. But I'm sure top players use supercomputers, yeah. By the way, let's go to Chidambaram's game beach mein. Okay, Chidambaram somehow managed d5 and now he's looking equal. And chat, अब मुझे लग रहा है Chidambaram is slowly going to take the initiative. ये bishop c5 looks like an excellent diagonal. Combined with the rook on the h file, अगर ये queen यहाँ आ गई, game is over. So I think bishop c5 is an excellent move. And Chidambaram again equalizing, I think. Do you like attacking a short castle king with all your pieces continued without castling? I love it. London mein that's very common. I really love it, man. I have a question. When we see some opening name as defense, like Nimzo defense, king defense, then defense use of black or white? It's use of black. Usually when black plays the opening, it's mostly called as defense because black plays after white plays. Baki koi aisa nahi hai because King's Indian, for example, it's not really a defensive opening. But it's called defense because it's played by black. Favorite opening with 1e4 against black. If I'm playing 1e4 as black, I would say the knight off is my favorite because it'll give you attacking chances as well. But if I'm playing white as 1e4, which I don't do too often, I like those end games. Yeah, matlab bishop b5, bishop takes c6, exchanging, Rai Lopez exchange, going for some strategic position, no tactics. ऐसी मुझे बहुत पसंद है. Like Italian is also fine. Who is leading Chennai Super Kings? चिदम्बरम एक जेल में एक टॉप. अरे भाई भाई स्ट्रीम में अनीशा आ जाएगी क्या? पता नहीं यार. टुडे वी माइट नॉट सी अनीशा इन द स्ट्रीम. शी माइट बी. जैसे जब कार्लसन और आनंद का मैच हुआ था तो उस टाइम पे पीटर हाइन एंड नियल्सन वाज द कॉमन सेकंड टू बोथ दोस प्लेयर्स. तो ही काइंड ऑफ विड्रू फ्रॉम दैट मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप ताकि वो किसी को फेवर ना करे. तो अनीशा आई थिंक विल आल्सो विड्रॉ फ्रॉम टुडे स्ट्रीम because she can't choose one among Anand and Vishy. Among Magnus and Vishy. Nihal playing fast. Yeah, Nihal is 5.5 minutes on the clock, but almost 6 minutes now. But I still feel ki matlab his position is not so great. And white can always exchange. Like he's exchanging a few pieces now, and it will simplify very quickly. And Nihal can't win this, man. I don't see Nihal winning this. How do you win this as black? How on earth do you win this? If I was white here, Nihal would struggle to win against me. I can promise you. This is not easy to win. Draw कर लेगा Nihal, but win करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. इतना सही solid position है white का. Now it's a typical London, yeah. The pawn will come to c3, and there's a reason why the London system is drawish, yeah. This is the exact reason. It's so solid. How do you win this? And you also played a5, so you have weak light square, so it's not even the best version. Anisha will join for me. She has to join. Okay. ज़्यादा over importance. Okay. Let's see if that's true. Endgame में bishop और knight कौन prefer? Depends, yeah, depends. अगर pawns are on both sides of the board, then usually bishop is stronger. But कई बार blocked position होती है तो in that case knight can be stronger. But most cases bishop. I think किसी Kasparov में किसी ने कहा था कि मतलब the weakest bishop is better than the strongest knight. Of course, this is not exactly true, but it was kind of a good quote though. He plays 95, but now c4 and a3. And I don't know where this knight is. Yeah, he plays 95 because he knew he cannot win this. He knew this. And that's why he plays 95. Hey हरीश भाई कैसे हो यार? आरती भाभी कहाँ छुप गई? No updates. आरती भाई नेट पे ही है यार. She only exists on the internet. तो इन शॉर्ट आपको बैड ड्राइंग ओपनिंग पसंद है? बैड ड्राइंग नहीं भाई, ऐसा नहीं है. आई प्ले द राइट ऑफ एज ब्लैक. मुझे वाइट से सॉलिड खेलना पसंद है बिकॉज आई बेसिकली नेवर लूज. मैं वाइट से कभी हारता ही नहीं हूँ. लाइक मेरा बहुत रेयर लॉस होता है वाइट से इन क्लासिकल चेस, एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर प्लेइंग सॉलिड एज वाइट बिकॉज ब्लैक इज ऑलरेडी ऑन द डिफेंसिव, राइट?
आज समय told on B-side stream that Vidit and Anish will enter in WWE style with full intro and he will try to do manual casting with audience. अरे that's nice. अगर ऐसा होगा तो आपको खराश बहुत है, विक्स ट्राई कर सकते हैं. विक्स ही खा रहा हूं यार. What if Vishy plays MPL? I don't think so, bhai. No offense, but neither is he a junior and neither he needs that extra spot in GCT. He can get it if he wants to. Aravindh has won the national rapid in Blitz by. He is very strong in short-term controls. And Filhal, Aravindh ने queen trade कर ली है, so probably white is also out of the woods. There's no mate happening. But Aravindh equalizes now. I don't see why white should be better. He has the 2 bishops as well. Black also has 2 bishops. He has the open B file. And this bishop is stupid for now. So I think Aravindh is equal. He's equal and he might just draw this. If Aravindh draws this, he goes to 29. And that means Nihal Sarin has to win with the black pieces. And that's looking more and more difficult now. And he's forced to win this because if he draws and Aravindh wins, that's over. He cannot catch up. And that's why I think he has to win at all costs and he's trying his best. 26 of puzzle rating but rapid 15. So what to do? Work on your other fields, man. Work on strategy, work on openings. I would suggest, getting a coach if possible, some courses maybe. Middle game पे काम कर रहा है बहुत. गले में खिंच के समोसा खाना बंद करो. किस टाइम रात को होगा विशी का कल से अलार्म लगा दूं भाई? पूरा 8:25 का अलार्म लगा दो, 8:30 स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी भाई. भाई मेरे पजल 3200 है यार, तो इट हैपेंस. Yesterday Hikaru was scared to play versus Raunak in RCC. भाई रौनक कल भी क्वालिफाई कर गया यार RCC में. He qualified yesterday too. So Raunak is like crushing it in online chess nowadays. Like he's also back in form. पता नहीं. Anyways, chat जितने लोग chat में हैं 350 लोग देख रहे हैं, सबके सब हाई लिख दो भाई. Let's go भाई. सबके सब हाई लिख दो. Come on chat. सबके सब जल्दी से हाई लिख दो chat में. Let's go. NM साहिल भाई टाइटल से गुकेश हटा दो. भाई हटा देता हूँ यार. लो भाई. I'll remove it. I'll remove गुकेश भाई. इतनी प्रॉब्लम हो रही है बेचारे गुकेश के नाम से भाई. ये लो हटा दिया भाई. गुकेश इज आउट. चिदम्बरम का नाम डाल देते हैं यार को. He deserves it I think. ठीक है भाई. डन. हाय साहिल भाई. हे कार्तिक भाई. ये हुई ना बात. This is what you want. Did you ever win a losing position due to opponent's blunder? Of course man, of course, many times. But I think I've blundered more than seen blunders on my opponent make. Finally भाई कह रहे हैं okay. मैं रैपिड में 1200 से 150 हो गया. Any tips? NM देवता. चल वे मजे मत लो रे कुछ भी. Hi low nice. Knight to D6 chat is looking worse and worse now. I think Karthik and Murli will destroy Nihal here. And Nihal will be out one round before. I think it's over. I think it's over now. It looks really bad. I told you it's really bad. And this is how you win with the London system chat. You wait for your opponent to overextend and then you destroy him. And this is how you win. Let's go h4, h5, break through on the king side. ये diagonal open करते हैं. You can also play a3 to push the knight back to a6. And this is just winning for white now. So much space, so active pieces. Nihal is getting crushed. He's getting crushed. London is trash कह रहे हैं प्रांशु जी. क्या बीमारी है भाई आपको? Hey Anshit, how are you man? Why not c4 in London? c4 actually plays white in some openings. If you play c4 in the London, that's the Queen's Gambit declined. So it already has a name by. Hello bro, क्या करूँ? 12 से 150 हो गया भाई. Tactics all करो रे. Tactics. That's the number one advice always. What do you revise just before OTP game? Openings yaar. I think whenever I play a classical chess tournament, it's my habit to kind of spend 2 days, 3 days just to revise all the openings. And also the games I've played on those openings beforehand, because your opponents will look at those games and prepare against you. So तुमने क्या improvement देखी है वो भी देखना पड़ता है. But कई बार कोई ना कोई शैतान opponent होता है, वो 5 साल पुरानी गेम उठा के ले आता है and then you don't remember what the hell did I play here. London is waste than Bonk Cloud. ये लो भाई. साई भाई आपका नाम इतना पवित्र है, मैं कुछ कह नहीं रहा आपको. बट थोड़ा ध्यान से भाई. कोई क्रेजी गेम है क्या? बहुत है भाई. Do you think we missed out on one of the most competitive chess heroes? Magnus wasn't born because we would consider all corrupt as the peak. I mean, you can't say Carlsen is not born because if Kasparov coached, I think it was Magnus, right, for a couple of years. If Carlsen was not there, Kasparov would probably coach somebody else like Caruana maybe if he was in the mood.
And if that happens, then of course, like probably he would be the Carlson. So you cannot say for sure कि Carlson के तो कोई नहीं होता. निहाल की तो लग गई भाई. This is lost. The king is also weak now. Brief look at Chidambaram's game. क्या चल रहा है? I think he's fine. Chidambaram is fine. He will draw this game. I don't see White winning this, at least not easily. And if that happens, Chidambaram will go to 29. Nihal will stay on 26. And that means Chidambaram just needs a draw. I think he's already winning because tiebreak Chidambaram is ahead. Yeah, he will probably win this if Nihal loses and he draws. Carlson is live. Nice. What to play against the London? I think setup है Bishop D6 and Queen to C7 setup है Knight BD7 के साथ. That is the best setup, which is the most irritating. I hate playing against it. That's the only setup. Yeah. बाकी सब I can handle. London is trash. Delhi is gem. Yellow bhai. Hi bhai. Long time no see. Welcome on bhai. I think I saw you yesterday though. Got selected as a volunteer chess umpire. You will be there, right? I will be there. Not sure in what shape or form, but I'll be there, bhai. Congrats, bhai. What do the standings look like, guys? Standings right now look like this, bhai. They look like, in white and grey color with, 1, 2, 3, 4 written here. That's how they look. G7 वाला बिशप काम क्या करता है धरती पे बोझ भाई कहाँ है G7 बिशप कौन से वाले कोई G7 बिशप है ही नहीं भाई यहाँ कोई बिशप है ही नहीं G7 कौन सा देख रहे हो तुम Junior JC final tomorrow. Yeah, man. We'll clash with Novice Chess. So I really doubt we'll be able to cover it exclusively. Vix, बहुत मत खाया करो उसमें लूको करना हो सकता है क्या बात कर रहे हो तुम क्या बात कर रहे हो भाई याद थू क्या बात कर रहे हो लंदन में E5 वर्क करता एग्जैक्टली चैट सुनो मुझे लॉन्ग टाइम नो सी बोलना था इसलिए यहां घुसा दिया बढ़िया है निहाल तो गया यार just knight d7 and then even I don't see what is the problem for black is absolutely fine ये रुक थोड़ा awkward तो है but symmetrical है स्ट्रक्चर काफी हद तक you can't go d5 but white doesn't have any pawn at once f4 is risky because of bishop g4 knight g4 so white doesn't have a clear plan here bishop e3 खेल सकता है at best but that will not change things and this should be a draw and if Nihal loses it's over Nihal wins you to कुछ भी भाई by the way d5 was not the best move by Karthik and Murli now and Nihal should now take on e4 and he does take on e4 the game has become a bit more complicated because after bishop takes e4 there is knight to f5 attacking the queen and black's pieces are kind of coming into the game back into the game still white is better but not and now chat there's a good move for Nihal knight to g8 will he find has he played queen e4 by the way? Let me confirm this oh he's not played it yet okay I'll play it my bad if queen e4 there is knight to g8 that can give some chances to equalize for black मैं सोचा था क्वीन c2 चिदम्बरम ये क्या है भाई पानी पूरी ज्यादा मत खाया करो उसमें ओके किसी को नारायणा कार्तिकेयन याद है फॉर्मूला 1 वाला अरे भाई ये तो अलग ही हो गया What do you do throughout a day? For the past 3 days, it's been like just streaming. I think मैं सुबह उठता हूँ नहाता हूँ स्ट्रीम सो जाता हूँ आई थिंक यही चल रहा है मेरा एंड कल से थोड़ा रिलीफ में कल दिन को फ्री जाऊंगा मैं कल दिन से फ्री जाऊंगा मोस्ट लाइकली दुनिया का कोई भी G7 बिशप धरती है बोझ ही लगता है यूटिलिटी टैक्स A1 which is literally square why he doesn't care about but it's not about the A1 square it's more about the E5 and D4 squares A1 का स्ट्रेस इतना नहीं है उसको समटाइम्स इनफैक्ट अगर एक्सचेंज मिले भी तो लोग मारते नहीं है बिकॉज किंग वीक हो जाता है सो A1 is not important but E5 and D4 are Is it possible for Magnus to reach 2000? It is possible, indeed. But difficult, of course. आपको एक बात बोलूं जो टेररिस्ट कश्मीर में लोगों को मार रहे हैं 90% of the Indian citizens not Pakistani. Okay, so I don't know how that's relevant. By the way, D6 now, and now chat, there is a move knight to F5. And Nihal Sarin has blundered spectacularly. Now Karthik and Murli is completely winning. King F7, Queen takes H6,
and Nihal Sarin will get wiped off in this game. After queen s6, knight g5, knight e5 incoming, rook e6 incoming, rook e3, rook f3 incoming, and Nihal Sarin is completely lost. Let's go to the Chidambaram now. If Chidambaram draws this, he is the winner. And Chidambaram has also made a mistake apparently. Now the d6 pawn is hanging, and now somehow both players losing. वहां से जो तीसरा प्लेयर था कौन था? रौनक की मुंह में लड्डू फूटा. एक बार रौनक की गेम देखते हैं भाई क्या कर रहा है. रौनक की गेम इक्वल है. रौनक की गेम मुंह में लड्डू फूटा होगा भाई अभी. आई थिंक फॉर श्योर कहीं ना कहीं तो फूटा है. लेट्स गो टू द गेम ऑफ चिदम्बरम अगेन. भाई दोनों के दोनों हार रहे हैं यार. ड्रॉ चाहिए. इफ चिदम्बरम ड्रॉस ही इज द विनर बिकॉज निहाल इज कंप्लीटली लॉस्ट नाउ. कंप्लीटली लॉस्ट. यहां से तो आई थिंक मतलब मोस्ट लाइकली सब हरा देंगे यार. सब हरा देंगे ब्लैक को यार. कि तो खत्म है. खत्म. अर्जुन का क्या भाई? अर्जुन आई थिंक अर्जुन इज प्लेइंग but Arjun cannot win the tournament. He's playing Leon. Leon and Arjun are kind of out of the deal now. They will draw this game most likely. So that match is not important. योश भाई क्या हाल है? लड्डू मुंह में फूटा या पेट में? भाई पेट में फूटता है मुंह में फूटता है? मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली. टीवी बंद कर दिया है. अभी जितना गाली देना है दो. नहीं भाई यार गाली मैंने कभी गाली दी है स्ट्रीम पे? कभी नहीं दी आज तक कभी नहीं दिया. कभी नहीं. सांस भी मत लो उसे. मन में अच्छा हाँ मन में फूटता है रे. अरे हाँ रे मुंह में नहीं फूटता. अरे मैं ही पागल हूँ. Which Indian junior do you see playing candidates in the coming years? I guess each and every one of them, man. Like I think considering how strong even Raunak has become now, and he was supposed to be the weakest, so I think everybody could. I think we might see 5 years from now like the 16 player candidates खेल रहे हैं. 16 में से साला 5, 6, 8 तो इंडियन ही है. इग्नोर कर दिया. इग्नोर नहीं किया भाई. चैट कम ऑन चैट यार कम ऑन भाई. 200 कुछ लाइक है यार. कम ऑन भाई कर दो यार. 400 लाइक कर दो. कम ऑन चैट प्लीज. एंड इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट डू सब्सक्राइब. कल ही एफ बोला था भाई. मैंने नहीं बोला भाई. आप किसी और को सुन के आए हिमांश भाई. कल शाम को तो 9 बजे की स्ट्रीम भी नहीं थी. पता नहीं किसको सुन के आ रहे हो आप यार. भाई चीज बस पिज्जा खाने का मन यार. ए मंदर भाई बस यार बस आज नहीं बस भाई बस नहीं खाना चीज बस रे. मेरे पतला होना रे. What do you think Nihal is going down the path of Andrew Tang where he is a god in online chess but doesn't do an OTP? If you want to be a god in online chess, you probably should imitate Hikaru and not Andrew Tang. He could be the Hikaru. Of course, he could be the Hikaru. But I feel ki Nihal has not reached Hikaru level just yet. And if he doesn't, तो बीच में अटक जाएगा. So he really needs to kind of improve himself in classical as well. Mr. Beast का वीडियो देखा मैंने. वो चॉकलेट फैक्ट्री वाला बहुत सही था यार. सोने से पहले कल देखा था मैंने. पिज्जा विद मोज़रेला. उफ अरे यार ये खत्म यार. क्वीन से आगे तो गेम खत्म हो गई. आई मीन हाउ कैन यू सर्वाइव क्वीन टेक्स h6 knight e5 चेक? इट इज इम्पॉसिबल. लाइक एक बार यहाँ घुस गए तो भाई फिर तो घर में घुस के मार रहे हैं ना. फिर तो कोई चांस ही नहीं है. आई मीन कश्मीर फाइल से तुम्हें पता ही है. लेट्स स्पैम डिलिशियस फूड्स इन. अरे यार मैं चैट पढ़ने तुम ना पढ़ने मजबूर कर रहे हो. चैट के लोग मिस्टर बीस बनके साहिल भाई को जिम इक्विपमेंट ही गिफ्ट कर देते हैं. नहीं भाई नहीं चाहिए जिम इक्विपमेंट भाई. वो जिम इक्विपमेंट ना यहाँ कोने में पड़ा रहेगा और सिर्फ गिल्ट होगा उसको देख के. ओनली ग्रैंड मास्टर गौरी कैन से दिस गेम फॉर ब्लैक. ग्रैंड मास्टर गौरी भाई जो भी बोलो दुनिया का सबसे खतरनाक ग्रैंड मास्टर गौरी है यार. मतलब बिना जीएम होने के बाद भी जीएम है वो. बाकी जीएम तो बेचारे जीएम नॉम लिए. गौरी भाई ने कहा नहीं चाहिए. साहिल भाई पिज्जा बगैर कुछ खाया? नहीं यार. आपका बीएमआई कितना है यार? बीएमआई मेरा आई थिंक इट इज लाइक 29. इट साउंड सो सस या मतलब ओबी से सीधा एक कम. बट इट इज एक्चुअली 29 28 आई थिंक. ऐसे 28 आई थिंक इनफैक्ट. ज्यादा है बहुत ज्यादा यार. अंडे वाला. अरे यार हाय सर लॉन्ग टाइम नो सी. अबे स्ट्रीम में 4 बार बोल चुके भाई. यार काफी आगे है भाई. वही तो कह रहा हूँ ना भाई. मैं मेरे एप्स हुआ करते थे कॉलेज में यार. बहुत ज्यादा हो गया है. अब कम करना पड़ेगा भाई. तुमने सीवीआई की वीडियो नहीं देखी मेरी? इतना आगे वाओ. तो ऐसे बोल रहे से मैं अपने बोर्ड के नंबर बता रहा हूँ. इतना आगे वाओ. शर्मा जी के बेटे लगते हो. बाय द वे रौनक इज लूजिंग क्या? चलो भाई रौनक इज लूजिंग. सो चिदम्बरम एंड निहाल सरीन ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि कम से कम उन दोनों में से कोई जीतने वाला है. वेट भी बीटी. अरे ये क्या है? सो आई थिंक या क्वीन g3 नाउ ओवर भाई. ये पॉन बचने का तरीका. अब बिशप p4. ये क्या है? पीस दे दिया. व्हाट?
What the ये क्या था भाई? अच्छा, टैक्टिक्स खेल रहा है लौंडा, बट क्वीन टू C3 यहाँ पे एंड द गेम इज ओवर. क्वीन C3 भाई, 8 डिस्कवर अटैक. चिकन रोल या फ्रैंकी रोल मंगा दो. अरे नहीं यार, पतला होना है यार. मेरा 27 है. अबे जब तुम्हारा 27 BMI है तो 29 को वाव क्या कर रहे हो रे? और मेरा 29 भी शायद 28 ही है मेरा. ये क्या इसका है भाई? ये दोगलापन मतलब बेशर्मी है भाई. तो who will Raunak play in RCC tonight? I don't know भाई. I really don't know. आज 9 बजे ऐसे आज दुनिया में अगर मतलब unless an asteroid strike happens, आज तो भाई मैच एक ही देखना यार. आज ओट्स खाओ भाई. ओट्स भी खाएंगे यार. शक्ति सिंह का 19 है. व्हाट द हेल. एनीवे लेट्स गो क्वीन C3 भाई. अरविंद इक्वलाइज्ड. क्या बात करो? ओह, अरविंद इक्वलाइज्ड एंड दैट मींस इफ ही ड्रॉज देन निहाल सरीन इज आउट. अरविंद चिदम्बरम विंस मोस्ट लाइकली. आई थिंक सो या. मैं दिवाली के पहले 29 था, आज 21.6 है. ओह माय गॉड, इतना कैसे लूज किया भाई? मेरा 28 है भाई. सब मेरे ऐसे ही चैट में भरे हुए हैं. Arvind Holding, okay. Why Farooq Almatov is so humble? I have not met him personally. I don't know how humble he is. I lost 40 kgs man in like 1.5 years when I went to college and से एक साल पहले से. So I know how to lose. It's just टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई. जब तुम दिन में 9 घंटा स्ट्रीम कर रहे हो, उसके बाद तुम क्या वर्कआउट करोगे यार? कहाँ से वर्कआउट करोगे भाई तुम? टिक्कू एंड वारिकू फ्रॉम फरीदाबाद. इस चेस्ट से क्या फायदा होगा इनका भाई? इनको बहुत सारा पैसा मिलेगा. अरे पैसा मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी भाई. इट्स बिजनेस. सुबह जल्दी उठो भाई. जब स्ट्रीम 12:30 तक चल रही है और तुम 3:30 से कर रहे हो तो नींद इमीडिएटली आती नहीं यार. 1-2 घंटा वेट करना ही पड़ता है. एंड देन से वेट करने के बाद फिर 3 में तुम सोते हो, फिर सुबह उठते हो तो भाई थके होते हो. अब पता है कि भाई स्ट्रीम करनी है थोड़ी देर में, फिर तुम्हें वीडियो डालनी है सेकंड चैनल पे, फिर तुम्हें कुछ मेन चैनल वीडियो डालनी है, फिर तुम्हें कुछ करना है. तो इट्स इम्पॉसिबल. What did you do? I danced, Rachit bhai. I used to dance like crazy. Like every day 1 hour. I had a playlist prepared. I used to alter the playlist ताकि मैं डांस गाने से बोर ना हूँ. And I used to dance for exactly an hour. And my diet went like 1/5 during, I think this was like in 12th standard and first year of college. I used to have at that point like 4 chapatis a meal. इतना ज़्यादा खाता था मैं. और it went down to two or one a meal literally. So वो हो गया and then 1 hour dancing it helped. कथक और कथकली नीदर. कथकली का मैं फैन नहीं हूँ भाई. आई यूज्ड टू डांस नॉर्मल बॉलीवुड एंड हिप हॉप. फ्लाइंग बीच को देखो, इंस्पायर हुआ. फ्लाइंग बीच अलग है भाई. समोसे छोड़ दो. समोसे मैं डेली नहीं खाता हूँ रे, महीने का एक टाइम का यार. मेरा BMI डिक्रीज टू 27. ओ माय गॉड. कोविड ले लो भाई, जस्ट जोक होना चाहिए. वेट लॉस होगा 10 दिन में. या वो आई थिंक वेग साई ने जोक फैलाया भाई. You lose your dance stream whole tournament and every time you lose a game you dance 30 seconds before the next game win. भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड याद करते करते ही मैं सो जाऊंगा यार. इतना कॉम्प्लिकेटेड डांस वीडियो वायरल करना पड़ेगा टिक्कू भाई. अरे यार मैं डांस, पता है मेरा दिमाग में तो है यार. कल को अगर चेस चैनल चले मैं डांस चैनल भी निकाल लूँ यार. बहुत प्लान है यार. बट सारा चेस चैनल नहीं चलो, डांस चैनल क्या निकालूं? साहिल टिक्कू भी तो अलग है. थैंक्स भाई. वही तो, उस चैनल पे अलग वीडियो डालनी है भाई. दिमाग खराब. अरविंद रुकसैक ब्रिलियंसी. क्या बात कर रहे हो? रुकसैक कब किया रे इसने? अरे ये ब्रिलियंसी नहीं. अरे ये तो इसके लेवल पे मतलब पीनट्स है रे, पीनट्स. बट व्हाइट स्टिल हैज द आउटसाइड ए पॉन, नो? सो इट्स नॉट ओवर राइट, और इज इट? अच्छा, किंग D4 आ रहा है रे. ये तो ब्लैक जीत ही जाएगा. सो नाइट A6 चेक इज द ओनली मूव आई थिंक, अदरवाइज ब्लैक जीत जाएगा. ये तो चिदम्बरम इज विनिंग चैट. निहाल की तो लग गई भाई. अरे निहाल भाई ये क्या कर दिया रे? कितने फ्री पीस देगा यार ये? कोई फेमस कोरियोग्राफर को बुलाओ. भाई मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड खतरनाक कोरियोग्राफर है बाय द वे. टिकू भाई चिकन डोमिनेटर पिज्जा. लकीली आपने मेरे फेवरेट पिज्जा का नाम नहीं लिया, सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट वेज एक्स्ट्रावागैंजा. लेट्स गो फॉर दैट. हाउ इज BMI कैलकुलेट? कुछ होता है हाइट और height divided by weight, height in centimeters divided by weight, yeah, something like this. I don't know, squared something, I don't know. Yeah, weight by height square, exactly. If Vishy wins today, आज साहिल भाई डांस वीडियो डालेंगे खुद का. If Vishy wins, मैं तीसरे चैनल खोल के ना उस पर एक ऐसी मजे में वीडियो डाल दूंगा. डन भाई, डन. एक डांस वीडियो डाल दूंगा मैं, कंफर्म, प्रॉमिस. अगर विशी आज जीत गए तो आज.
Anish Nag भी बहुत fit है. He also dances in pool. I mean, he's very fit for the mermaid community. He's a good influencer there. So we are judging him based on ऐसे करके, but he's very popular there. स्पाइसी पनीर पर खाने का मन कर रहा है. शुभ भाई शुभ शुभ बोले, वरना टाइम आउट नाम की बीमारी होती है चैट में. What if Vishy wins in Armageddon? That's also a win, man. कार्लसन को हराना होता है. Like nobody gives a shit where you defeat Carlson. प्रग को लिटरली प्रग ने तब हराया था कार्लसन को जब कार्लसन को कोविड था. And even right now he defeated Carlson with a simple peace blunder, which is just it's just Prag played a marvelous game, but Carlson blundered in a horrible way, जो वो लाइफ में कभी नहीं करता है. वो उसका ऐसा ब्लंडर कार्लसन 10 साल में एक बार मारता है. And it happened with Prag. So he was a bit lucky there. And that's why I think कि win-win होता है भाई. किसी को घंटा फर्क पड़ता है कैसे जीते. विशी जीतेंगे तो नंगा नाचूंगा भाई. कोई किसी को देखना नहीं है वो 60 सेंट भाई, अनफॉर्चुनेटली. तंदूरी पिज्जा खाएगा विशी विंस. भाई रुको ना, पहले जीतने तो यार. Have you relished white cheese chicken lasagna और corn house pizza? I am not a big fan of corn. चैट कितने लोगों को कॉर्न पसंद है चैट में? डू यू लाइक कॉर्न? लाइक मुझे लगता है ना, कॉर्न जब भी तुम किसी पिज्जा में या कहीं डालते हो ना, इसे कबाब में हड्डी बनता है. दैट्स माई परसेप्शन. आई डोंट नो व्हाई. कॉर्न खाना तो रॉ खाओ ऐसे अलग से, वरना बीच में मत डालो कहीं. पिज्जा के बीच में पसंद है तुम्हें कॉर्न? रियली? मेरे को पसंद नहीं है पिज्जा के बीच में. आई डोंट लाइक इट. जैसे मुझे चॉकलेट में नट्स पसंद नहीं है. लाइक इट्स लाइक भाई चॉकलेट इतनी स्मूथ है, सिल्की है, खाओ, काहे नट्स डालने बीच में? तो सेम वे कॉर्न क्यों डालना पिज्जा में यार? स्वीट कॉर्न इज लव. या बट नॉट इन पिज्जा मैन, नॉट इन पिज्जा. पिज्जा के अंदर नहीं, लोग डालते, मुझे पसंद नहीं है. अरे भाई कितने पीस दोगे रे? सब कुछ दे दिया निहाल ने रे. या रॉ एंड बॉइल्ड इज फाइन, जो मूवी हॉल में मिलता है ना, दैट इज ओके. टिक्कू डोंट लाइक नट्स. या मैन आई डोंट. डू यू? चॉकलेट में नट्स किसके? वही ना, पसंद नहीं आता यार. चॉकलेट में कोई डाल देगा भाई. वो मेरे को स्निकर्स, आई एम नॉट अ बिग फैन. आई एम बिग फैन ऑफ मार्स. दैट काइंड ऑफ टेल्स यू. Elon Musk, please don't contact me. I'm ready to go to Mars. Jokes about bro, you're much too humble. Very political. Thanks a lot, Satvik bhai. पोल कर दो पिज्जा कौन? पोल करना है क्या? नहीं यार, पिज्जा के बारे में पोल नहीं करना, मुझे पानी आ जाएगा. ऑलरेडी आ रहा है, तुम देख लो ना. नो नट. नहीं भाई, दैट डजंट राइम. Nuts have essential fatty acids. अलग से खाओ, अलग से. Anyway, chat, a brief look at the game of चिदम्बरम. क्या चल रहा है भाई? अरे गेम कहाँ गई चिदम्बरम की? हाँ. अरे चिदम्बरम is winning. भाई चिदम्बरम is winning, dude. ये बंदा सबका डैडी निकला रे. ये भी जीत रहा है भाई. कैसे? How did this happen? Wasn't this a dead draw? A3, knight C3 attacking the pawn. King F3, knight B1 attacking the pawn, and yahan apparently G4 was the only move, which makes like zero sense. If somebody played G4 here, I would call the arbiter and say कि engine use कर रहा है, which makes no sense whatsoever. Knight C2 खेला, which is saving the pawn, the most human move. But now knight D2 check and I pick up the B3 pawn. So Chidambaram is now winning, chat, and this is, do you like donuts? I love donuts, bhai. And Chidambaram has won. Aravindh Chidambaram has won the game. He is going to win this tournament. Nihal, Sarin, the only chance you have is to win this game. The only chance you have is to win this game. Draw nahi chalega. Draw is tournament over, chat. Tournament over. If it happens, it happens into a draw. If it's a draw, the tournament is over, chat. It's completely over. Let's see. Nihal has to win this game at all costs now. Chat, do like the stream, bhai. Jaldi se 400 like kar do. If you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. विशी विंस. साहिल भाई जीएफ रिवील, ये क्या है? विशी जीतने से पहले ही लोग तेंदुलकर से ट्वीट करवा लेंगे. इज डक अ बर्ड? नॉट श्योर मैन, नॉट श्योर एक्चुअली. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. स्ट्रीम बंद करो. सो Nihal has to win, chat, because as you can see, Chidambaram has got to 31 points. If Nihal draws even, he goes to 27 and he cannot catch up with Chidambaram in the final round. So Nihal Sarin has to win this completely lost game. And this is very difficult. I know Vantika hai, but he also lost to, by the way, Aravindh. Remember, Arvind lost to Aravindh, I think. So it's not all done and dusted yet. And Queen B3 here would be an excellent move, defending the rook. This is the only chance for Nihal. He has to win this completely lost game. Otherwise, Arvind Chidambaram is going to be the winner. And he has blundered. Karthik and Murli has blundered. It's not winning for him. Bishop B1, the position is draw now. Nihal somehow saving the win, and now maybe he can outplay black here, chat. Blunder by Karthik and Murli here. Let's take on B1. Only move
Bishop b1, only move for Nihal Sarin here to at least hold equality. He plays it. अब निहाल को ये जीतना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है भाई. He has to win this game, otherwise the tournament is over, chat. The tournament is over. In fact, I'll end the stream if Nihal draws this, because winner है पता लग चुका है. This is the only chance for Nihal Sarin. Maybe queen f6, rook f8. The material chat is dead equal. White has 5 pawns, black has passed pawns, 5 pawns. Black's king is weak. So if anything, white is slightly better, but the material is equal and the position is kind of equal because black also has a passed pawn. So let's see. Tournament over nahi hai. Nihal has to, first of all, if Nihal loses or draws, the tournament is over, chat. Aravindh Chidambaram will be the winner of this tournament. If Nihal Sarin can win, then we go to the final round. Gupta played bad. Gupta is not having this tournament, man. It's not his tournament. Virat should also be forced to play in these tournaments. There's no point for VD because this is the qualification for the CCT event. Virat already plays that tournament. और नेक्स्ट एसएलटी में इसका विनर खेलेगा. एग्जैक्टली, निहाल सीक्रेटली इन कॉन्टैक्ट विद ग्रामर से गौरी. अबे निहाल कुछ करना पड़ेगा यार. निहाल हैज टू फाइंड सम गुड मूव्स एंड इट्स पॉसिबल, चैट. कार्तिक एंड मुरली हैज 54 seconds on the clock. 54 seconds. Nihal has more than 2 minutes. So definitely some pressure on white as well. And he literally blundered like +8, +9 position to equality now. So he will definitely be on a tilt. When you're completely winning and you land up in a dead drawn position, that's not the best psychology to be in. And now I think Nihal Sarin can take the lead. Let's see if he can win this, chat. Chat, क्या लग रहा है? Nihal जीतेगा कि will it be a draw in the tournament? क्या था, chat? Will Nihal win this, or will Karthik and Murli hold and, spoil all Nihal's dreams? And, then, Aravindh Chidambaram will be buying Karthik and Murli a beer, a pizza. Some carry draw, Nihal win. Rook d8 is set to win, right? Yeah, now the rook is attacked. So first thing, if you play rook a d8, queen e7 trades the rooks. And you can't play rook e7 because of queen 8. So Karthik and Murli going for the draw. This is a drawing attempt. Queen e7 trades queens. Very, very drawish attempt by Karthik and Murli. He's trying, I think, अरविंद चिदम्बरम से कॉल पे बात हुई है पिछली रात को, भाई ड्रॉ ले लेना. बिकॉज नाउ क्वीन टू f7 इज द ओनली मूव. एंड even though it's rook end games, it should be draw, but black does have an outside pass pawn, so maybe some potential if black can do something, get the rook to d2, some possible chances still. निहाल जीतेगा तो चिकन डोमिनेट पिज्जा खाऊंगा. ऑसम भाई. चैट 500 की वॉचिंग है. डू लाइक द स्ट्रीम. लेट्स गेट टू 400 500 लाइक्स. एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस. How frequently won? Okay, भाई Arjun already qualified for CT. Yes, he won the first leg. Yeah, but now the thing is, chat, हमें किसी तरह ना ये पॉन पुश जल्दी करने हैं. ये पॉन यहां पहुंच जाने चाहिए ताकि निहाल कैन क्रिएट अ पास पॉन एज क्विकली एज पॉसिबल. एंड अदरवाइज rook end games are drawn. किंग को यहां दौड़ा के, या व्हाइट इज कीपिंग हिज क्वीन एक्टिव. विल दे गो फॉर द ड्रॉ नाउ? विल ही टेक? इफ व्हाइट डजंट टेक, द क्वीन स्टे ऑन द बोर्ड. 492 वाचिंग है, 500 नहीं है, तो तुम लाइक कर दो, 500 हो जाएगी भाई. लेट्स गो. ओ, ही डज नॉट ट्रेड क्वींस. उसने क्वीन ही ट्रेड नहीं करी भाई. ही नोज द रूक एंड गेम इज बेटर फॉर निहाल. ही डज नॉट ट्रेड क्वींस. द ब्लैक किंग इज वीकर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट ट्रेडिंग क्वींस. बट दिस इज एन ऑल इंपॉर्टेंट गेम, चैट. अगर अगेन पॉइंटिंग दिस आउट, इफ निहाल लूजेस और ड्रॉस, Aravindh Chidambaram will be the winner of the second MPL India Chess Tour. If Nihal wins, then the final round becomes all important. We don't know if Nihal has seen the result of Chidambaram, so he might not even know, and this is very important. No, Karthik is being practical. He knows the black king is weak, so it's more important for him to keep the queens on board. कल को ये कोई pawn one मर गया तो perpetual के chances रहेंगे. Aravindh deserves this, totally agree. But will we see the match go into the final round? This is going to be very, very important, chat. Ye game is everything. If, for example, let's say Nihal loses or draws, I think final round will just be a formality and I will not even stream it. So this is going to be an important match. Sahil secretly wishing, leave it, yaar. Nihal gala rest karna hai. Nahi bhai, I honestly wanted to go to the wire, to the last round. But I think Chidambaram is like, bhai chup kar. अगर वो stream देख रहा है, वो मुझे गालियां दे रहा है अभी 10-15. B stats lost. B stats कहाँ है भाई? What happened in the other games? Other games, I think Chidambaram won. Chidambaram has won, chat. He has won. Vaisakhanar has resigned with a simple e4 pawn hanging. So Nihal Sarin has to win this at all cost. Nihal is unbeaten, so he also deserves it. Indeed. But Chidambaram, oh, g4. Very, very interesting move. Opening up his king.
Not a move I would have played, because now the white king is open. Imagine the rook being here suddenly, but it can't jump over its king, so not so easy. Arjun qualified for CCT, man. He won the previous MPL India Chess to the first leg tha. And now Queen H4 check is possible. And then Queen H4, Queen H3, Queen takes, King takes, Rook D3 check, King G2, Rook to B3, and Nihal is slightly better, but yeah, should be equal still, man. White also has a pass pawn, should be equal. This should be equal, man. Can Nihal qualify if win is second? No, only first qualifies. Nihal can qualify if he comes second. Second वाले को कोई नहीं पूछता भाई. Virus was absolutely correct in Chose That Started वाली movie, 3 Idiots. Absolutely correct. Second वाले को ढेला मिलेगा, first वाले को कार्लसन मिलेगा भाई. Let's go. जितना फेमस प्रग हुआ है recently, Chad, it's only been because he defeated Carlsen twice, and both times he got so much media coverage, and that only happened because he qualified for the CCT event, जिसके लिए qualification दाव पे अभी है. So same time next year you could see articles about Nihal or Chidambaram based on how they play, and this is all dependent on this game for now. Yokshish bhai, Raunak winning, it does not matter. Raunak is number 5 right now, or number 3. Even if he wins, he goes to 26. It's not enough. In fact, Nihal को जीतना पड़ेगा game. Second को कुछ नहीं मिलता. Sent to with. अरे यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ. Not in terms of objectivity, in terms of this tournament. Yo VK bhai. And now G5 played, controlling one pawn with 2 pawns. The only thing is, white can always play King E3 and F4. So you probably want to play Rook E3 first, preventing this, and then play King G3 and F4 and create a pass pawn. अगर ये pass pawn नहीं बना, then suddenly this rook will go to B3, and then I will play C5, C4 and create a pass pawn. He plays King G3 already, and now I think either King F6 or Rook D3 check or A4. One of these moves will happen. It has to happen. Or C5. C5 is the best this key. Yeah, he plays check, and now F3 will be played, chat. F3 played indeed. You prevent white from playing F4. Very important. King F6, indeed. Very good move. Controlling the E7 square, not allowing rook to come to E7. And now rook will go to B3 next, and you absolutely cannot allow F4. Agar F4 aa gaya, pawn takes, king takes, black cannot win this. He just cannot win this. Matlab, almost impossible hai. So he needs to somehow bring the king here. But white ke rook ne sab cut off करके रखा है यहाँ पे. And the king cannot approach. If the king was here or even here, then magic could happen. But king on F6 looks difficult, very difficult. I don't have player faces, man. It's not official stream. I don't have the player faces. Yeah, just I don't like to know who landed second on moon. Chat, do like the stream, man. Let's get to 400, 500 likes. If you're here for the first time, do subscribe. And well, chat सबके सब chat में लिख दो भाई. Chat, draw or Nihal win. Come on. What do you think the result will be? And C5, B4, white trying to exchange as many pawns as possible. It makes a lot of sense to exchange pawns because the drawing side increases its chances. An excellent move by Karthik and Murli. If I take, then rook C6 check, king E5, rook takes B6 should be a draw. And this indeed looks like a more and more like a draw, chat. कई लोग निहाल लिख रहे हैं, but this looks difficult. Buzz already indeed. Thank you for giving enough credit. What does Nihal play now? Does he play rook d5 to hold on? Doesn't make sense. Maybe he takes and plays a4, but anyway he will capture this pawn. Nihal winning, don't think so, Anurag bhai. Unlikely, very unlikely. Rooting for Nihal, but should be a draw. Yeah, even I'm rooting for Nihal, but this most likely is a draw, chat. One pass pawn is not enough to win the game. Maybe rook to d5 now was the best. He plays bc5, rook b6 check, king e5, rook takes b6, and then b3 will be played. And the only hope black has is to very quickly run the king to c4. Yeah, king, first of all, b3 saving the pawn, and then to run to c4, c3, play b2, and in the meanwhile not allow f4. But white can also try rook g5 ideas. That's also possible to win this pawn, and rook b5 also, by the way. He wins this pawn, comes back to b5, sacrifices the rook for the pawn, and then tries to equalize with these 2 pawns for the rook. But well, the game is not yet over. Nihal still thinking. 23 seconds for Karyakin. Oh my god, sorry Karthik, you're jinxing you. 30 seconds for Karthikeyan and 50 seconds for Nihal. He plays check. King f6, dead draw. King d4, only chance for a win. Rook behind pass pawn indeed. But if you play king d4, white has 2 pawns now. White could win as well, so you're taking a risk. Do you know Yuri Yakin? Yes, the first guy to space.
Bhai, Karthik Murli was 7 plus seconds. Nihal, what happened? Yeah, he was completely winning. He spoiled it, man. Both sides 30 seconds. 30 seconds for both sides, bhai. 30 seconds hai, bhai. अब क्या होगा chat? 30 seconds for both players. Indeed, looking like a crazy game. Nihal 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Sounds like the Curious Cave of Benjamin George, whatever the movie was. वो वाली 8, 7, 6, 5, 4. चल भाई. अरे चल दिया King D4 finally. He takes, and now King C4, preventing Rook B5. Rook G8 only move. Or the best move, I would say, Rook G8. And then chat B2. Chat, important moment. Rook G8, B2. What does white play? What is white's move, chat? Come on, important moment. Rook G8, B2. What does white play here? Very important. बताओ क्या खेलोगे? Maybe he plays up Rook E5 also. Let's see. Because there is Rook B3 ideas B2 के बाद. So Rook B8 may not even work. Yeah, Rook C8 probably. Now B2 will happen. Maybe let's see will he play B2 or not. Rook D5 could also happen. Yeah, check the king might be better. If you play Rook B8 directly after B2, then Rook to B3 might just win for black. So that's why you have to be careful. B2, let's go. I think that's the only try, Nihal. I don't see anything else. Because while he plays, and Rook B8 might not be the best because of Rook B3 check. He gives check, very important. He gives the check. And now the king will be forced to move forward. And now he can simply start pushing his own pawns. Now he can push his own pawns. He could totally, first of all, I think he could also play, I'm not sure if he plays G5 directly, but Rook B8 check, king to C2, and then he can start pushing, I think. Now it's time to push. Yeah, he pushes directly. I also thought it should work. And now, oh, it's winning! Nihal is winning! Nihal is winning! Fuck, it's winning! Nihal is winning! He spoiled it too! Nihal is winning! Nihal is winning! Nihal is winning! Oh my god, Nihal Sarin is winning! Oh my god, Nihal is winning, dude! What a turnaround! Karthik and Murli resigns! Karthik and Murli resigns! Oh my god, what a blunder! What a blunder by Karthik and Murli! Holy crap! Dude, ये क्या था? Rook B8 check is a dead draw! And with this, Nihal Sarin still in the fight. What a miracle, dude. Oh my god. Oh my god. मैं तो end stream वाले button पे cursor है भाई, literally. Oh my god. Yeah, Aravindh needs a draw, but still, dude, the match is gone to the final round. What a trick by Nihal Sarin, dude. He is insane. Karthik will be beating himself right now. Chat, just simple check. King goes here and simple. You can take on B2. King takes and G5. Simple draw. He played the move G5 directly and Rook D4 के बाद immediately resigned. Dude, that was insane. Insane. And with this, we have to go to the final round of the tournament, chat. The battle is still on. Now we have, first of all, Nihal Sarin against Raunak Sadhwani. Important match. Then Aravindh Chidambaram against Vantika Agarwal. Both sides of the white pieces. अरे भाई भाई ये तो crazy हो गया. Nihal sending prop to Vantika. Indeed. Chat, who do you think will win? Come on. Nihal or Aravindh? Remember, Aravindh needs a draw. If Aravindh draws, he's most likely the winner. Vantika can't beat. I am not sure, chat. I have seen many times the lowest seed beating the top seed in the final round. It has happened multiple times. Yeah, Rook B8. Aravindh will easily take on Vantika. Man, Aravindh, by the way, lost to Aradhya Garg. Aradhya Garg has a lower rating than Vantika. 100 points lower. Aradhya Garg की मेरी इतनी rating है भाई. मेरे से 50 point ऊपर ही है वो. So, it is possible, chat. Anything could happen. Friendship over with Aravindh now. Karthi best friend is Nihal. How was it winning? It was winning because now I'm queening, and if you try to stop me, I play Rook to B4, and now I can just take G6, B1 queens, G7, and you're one move short. Queen G6, and I pick up the pawn. So what a turnaround, dude! What a turnaround. Stream continues. Dude, मेरे गले की तो band है, but this will be fun to. अरे यार, match पूरा twist हो गया यार. I thought it's already over. Literally over.
Oof, what a match. And Nihal has to win at all costs. Now, Chad, look at the standings. Nihal is 29, Raunak 26, and Aravindh 31. So the only way Nihal can win this is Chidambaram does not win and Nihal wins. So that's the only way, bhai. Only way. But it's possible. सब इतना बोल के थकते नहीं जाते, थोड़ा एनर्जी बचा के रखो. Treat us with a cheese burst pizza after this long tiring stream. नहीं भाई नहीं. Table refreshed है भाई. अच्छा, you mean this one? अरे let's go. Why is the guy named Aravindh hated here? भाई hated नहीं है भाई. I just want a tough fight. Nihal को 65% वोट है भाई, बताओ. Even though it's almost very difficult for him to win. CSK qualification की तो मुश्किल है. Vaishak message he was dead better against Aravindh. Yeah. Messed it, yeah. Is draw sufficient for Aravindh? Yes. Tiebreak I think is better for Aravindh. I'm not sure about this, but it's slightly better I think. So in that case, Aravindh will win. Tiebreak exactly I think Aravindh का better chat. Arjun की rank is number 6. He's tied for number 5. कल थोड़ के लिए डॉक्टर दिखाओ और क्रिया करो. Tiebreak is more wins, I guess. No, I think it's individual scores and then book holes, if I'm not mistaken. Nihal win this. Arjun, Nihal and CCT. I voted for Nihal, but too easy for Aravindh. I personally Aravindh deserves a bit more than Nihal considering he defeated Gukesh. I totally agree, भाई. Totally agree. ये थोड़ी एनर्जी विषय के लिए. अरे तो एनर्जी की कमी की टेंशन मत लो भाई. अगर मेरा गला काम कर रहा है तो एनर्जी की स्ट्रेस नहीं है भाई. बट क्या टर्न अराउंड था ना यार, लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड. लाइक आई थॉट द मैच इज ओवर, आई थॉट द स्ट्रीम इज ओवर, इट्स ऑल डन, नथिंग टू लुक एट नाउ, बट सडनली इट चेंज्ड कंप्लीटली इन वन मूव. One round chat, final round of the tournament. Final round of the tournament. It's completely done. Final round. Nihal or Aravindh? Who will win? Hi Sahab. Why Gukesh was not playing? Net issues. If the bullet match in final, Nihal will have 90% chance to win. That's true, bhai, but this is not bullet. Karthik to the game so we can see Sarin streaming. Karthik the real MVP. Nice. Nihal ने कहा होगा भाई देख थोड़ा मदद कर दे, तू तो वैसे भी आउट है. Your take on who will win? I think Chidambaram will win because he needs a draw and he's playing Vantika who's much weaker. But if I know Vantika, she's very tricky as well and she's been winning most of her games in this tournament but could not convert it. And imagine if suddenly Vantika starts winning and Chidambaram पे pressure आ गया कि निहाल जीतना जाए and then he might just blunder, yeah. And imagine the pressure on Aravindh because imagine करो Aravindh was watching the games and he was like अरे जीत गए पापा का मैसेज आ रहा है Aravindh बेटा congratulations जीत गए like इतना खुश होगा ना वो, and then suddenly you know that it got spoiled. So I think it will be a lot of pressure on Aravindh and that's why it's going to be difficult. So Nihal still has a chance. I am far better than Nihal Arjun. Okay. Told you Nihal was in contact with Gavash Gauri. Yeah man, Gauri साहब हमें भी कुछ help कर दो यार. Chat, do like the stream. Let's go to 500 likes if possible. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel guys. हमारी family में शामिल हो जाए, मजे आ जाएंगे यार. Is there anything for creativity in chess? Was Boyfriend not right on saying chess is being a cramming sport? It is cramming, but I think creativity is still there. Standings ये है chat. Only 2 players have a chance. Aravindh Chidambaram and Nihal Sarin. And you know Nihal needs a win. And the only way Nihal wins the tournament is if Chidambaram loses and Nihal wins. Otherwise, Chidambaram needs a win or a draw to secure the tournament win. So, but Chidambaram is playing under pressure because he's so close to winning. He almost won it before a round, but Nihal somehow came back. So, lot of pressure, bhai, lot of pressure. Can we have both the boards together on the screen for this match? We could actually. That's not a bad, but dikhega nahi yaar. Dikhega nahi, I think. We can switch because dikhega hi nahi. And the main thing is, if Chidambaram draws, it's over. So we can just follow like we can follow alternative. दिखेगा नहीं board shot order. Board आगे हटा दिया. I am looking to chess. Tell me a thug moment in chess history. Thug moment. Thug moment तो भाई Grishchuk के ही maximum है भाई. Honestly, just Google Grishchuk thug moments. You'll find like so many. He's playing Vantika, man. It's a wrap. I am not sure, chat. I again told you last round when you literally had the tournament in the bag. वो तो सपने देखा होगा काल से गेम खेलने के, and suddenly Nihal comes back
And now Chidambaram has to again change his mentality and play a game with, against somebody who is supposed to win against comfortably. So unless offer draw is allowed, which I don't think it is, I think Chidambaram will be under pressure and he might just lose this. It is possible. I love this cheaper bot. The bot in all the streams on every channel, and after party to respect bot by you will be missed from tomorrow. Nice one. The most regular guy, yeah. Ban करने के बाद भी बंदा नया आईडी बनाता है कि आने के लिए. He's like कुछ भी स्ट्रीम मिस नहीं करूंगा भाई मैं. I will not miss any single chess stream. Scores क्या है स्कोर भाई? 2 points. Karthikeyan lost because you called him Kalakin and jinxed it. अरे यार, I hope not. ये टिक्कू भाई क्या हाल है? टिक्कू भाई, यो हमें भाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं. आपके नीचे वाला बार बॉक्स को हटा के अरविंद का मैच रख सकते हो, उसमें 12 मैच. अरे हाँ, ये बात तो है यार. आई कुड रिमूव दिस, दैट इज पॉसिबल. बट वो अपडेट कैसे होगा यार? द गेम्स विल नॉट बी अपडेटेड, नो, बिकॉज आई हैव टू कीप द बोर्ड ऑन द टॉप and I only have one screen. So if I show you कि मेरी वो screen कैसी है, you will be very scared कि भाई कैसे मैं manage कर रहा हूँ. I have like मेरे laptop पे एक तरफ subscriber count का screen है, एक तरफ वो white वाला screen है, एक तरफ chat है. There is no space. And इस वाले screen पे वो set होता नहीं है. So it's like it's impossible to add one more thing. Sahil 0 chat 1 WT. मैं भी regular हूँ by the way, long time no see. ये क्या है? Can we see Bonklo draw by Aravindh? That would be hilarious. I don't think Vantika will kind of do that. Monitor ले लो ना. Monitor laptop से connect नहीं होता ना यार. You cannot add, I think, 2 monitors to a single laptop. वो load ही ले नहीं पाएगा. So what you need is a desktop. वो I think आगे जाके कभी लेंगे. वो तो बड़ा खर्चा है भाई. Yo साहिल भाई, how are you? I'm fine. वह भाई तुम बताओ यार. Bot को mod दे दो, बहुत regular है. Imagine if we make the bot a mod. क्या बोलते हो चैट? एंड पता लगे सबको बैन कर दे भाई. ओह माय गॉड. नहीं रहने दो. यो दिवेश, हाउ आर यू? I use 2 monitors Mac, but how does your laptop work? Really? 2 monitor with your laptop? Because I searched about this and they were like it will just not work. Let's yo Agnish bhai. 2 मॉनिटर पॉसिबल है. आई डोंट नो मैन, आई सर्च अबाउट, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि मॉनिटर ऑर्डर कर दूं बाद में चले ना ढंग से, लैपटॉप लोड ना ले पाए तो कांड हो जाए. आई नीड टू बी श्योर अबाउट दिस बिफोर हैंड. वो चीज़ है. तो इसलिए आई विल नॉट रिस्क इट. आई विल नॉट रिस्क इट. तो आई विल बाय इट लेटर ऑन कभी जब मैं डेस्कटॉप लूंगा. एनीवेज, लेट्स सी. ओके, एक सेकेंड चैट, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. कुछ देख रहा हूं मैं. अच्छा, how many? 1 game left. Dock खरीदो. Does that work? I've never tried. I don't know. Try with TVLF. It works by the monitor. TVLF क्या है भाई? TVF क्या है? लोड ले सकता है, टिक बार 2 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो. Really? I'm not. Because मेरा लैपटॉप तो अभी आवाज कर रहा है यार. अभी तो कुछ कनेक्टेड ही नहीं है इसमें. लैपटॉप तो अभी आवाज कर रहा है. डॉकिंग स्टेशन. Really? Okay. तो मैंने नेट पे देखा था यार. It doesn't work. Anyways, I'll see. Once all the youngsters switches fully to chess, there will be a force to reckon with. Now most of them are also studying. Like Arjun now is for me should do it for chess. Yeah, but the thing is, yeah, for sure, I think they don't study full time anyways. That's the issue. So I think usually they are focusing 99% on chess anyway. Karthik, how many do you connect 2 monitors then to it? The thing is, Chad, it's different. मेरा OBS चल रहा है भाई. OBS चल रहा है. It's much more different than using it for normal purposes because OBS takes a lot of load on the laptop. So that's the main issue. वो चीज़ है भाई. So OBS के साथ it becomes very difficult. 100 subs थे जब 7 हूँ mod बना दे. हार्दिक भाई, that's very unlikely. और गेम स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई? जल्दी स्टार्ट करो यार, फाइनल राउंड है. Number of losses should be given more priority than number of wins and standings. I think the thing is they also want number of wins. They want basically people to be incentivized to go for wins, and that should be how it should work. Because draw में chess में top level बहुत draw होते हैं, and you have to incentivize wins. I know it makes there's more logic in going for people who have lost less, but to make tournaments exciting, they've gone for wins.
आई थिंक आई कीप इट सॉलिड भाई, कभी डेस्कटॉप ही लेंगे आगे, दैट मेक्स मोर सेंस, बिकॉज लैपटॉप में क्या है OBS सब अगर नहीं चलेगा तो फिर वो मॉनिटर वेस्ट है लिटरली. आई हेट वेस्टिंग मनी, सो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. एनीवेज मैंने डैड को तो पटाखे मिल सकते, डैड कहते अब पटाखे बैन है आजकल, काम करो. पटाखे बैन है आजकल, ठीक है यार. अपना टीवी लगा के चेक कर लो ना भाई, टीवी क्या लगाऊं यार. टीवी वहां है यार बाहर. Anyways, by the way, will we see the London now? Will we have the London system by Nihal, Sarin in a critical game? So that means in a must-win game, Nihal, Sarin is choosing to play the London system. What does that tell you, chat? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें उससे? In a must-win game, Nihal, Sarin is choosing to play the London system, and with this, the bishop has come to f4. What do you think about this, chat? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? Like, what is the inference you get? Yeah, so Nihal plays the London, and Aravindh plays the fianchetto. Course plugin. Do check out the course, learn some course. That will really help you. It's the best course on the website. Nihal doesn't want to win. Nihal ain't serious for the tournament. And tested OP. Sahil bhai is having a क्या है भाई? Means London is for Nihal. आज आफ्टर पार्टी की OBS ऑल द बेस्ट. भाई जब तक मैं OBS तो करता हूँ ना तो स्ट्रीम खत्म आती है यार. यही रन से नहीं खेलना चाहिए भाई. अगर निहाल जीत गया चैट, अगर निहाल ये मैच जीत गया तो एक ना एक बंदे को कोच लेना पड़ेगा चैट में. तुम देख लेना भाई. यू हैव टू, फिर तुम मना नहीं कर सकते. देख लेना, तुम फंस जाओगे तुम अगर निहाल जीत गया तो. You have to, because I've covered this in the course. लेवी का लर्निंग कोर्स लिया होगा नहीं. लेवी का कोर्स मेरे से अच्छा नहीं होगा, आई कैन प्रॉमिस. उसका कोर्स आई थिंक 1.5 घंटे का है वीडियो फुटेज, मेरा 4.5 घंटे का है. बुरा मत मानो, सुनो बुरा मत मानो. अर्जुन प्लेड 1h3 कुछ भी. करण जी कह रहे आप मत लो भाई, आपको तो वैसे अब तो मेरी गंदी ही ले गए तो कोर्स तो क्या ही लेंगे. मीन्स लंडन इज अ डबल एज स्वर्ड, तो इट्स अ गुड ओपनिंग देन. नो विशी वैसे कार्सन, विशी इज वाइट भाई. अगर जीता तो मैं ले लूंगा. ये हुई ना भाई अक्षत भाई, ले लेना भाई. लेना भाई, एक दो लोग चैट में लेना भाई. डन, लेट्स गो. नाउ 95 मेक्स सेंस. नो कमेंट्स. मॉड बनना है, ऐसे नहीं बनते भाई. 10 मिनट के लिए मॉड बना दो. मैं आज पैदा हुआ था. नाइस. थोड़ा रोके दिखाओ भाई, रोके दिखाओ यार. 4.5 आवर्स में 4 बंदी की बात होगी. ये क्या है भाई. एनीवेज, अर्जुन लिटरली प्लेड h3. क्या बात कर रहे हो तुम. अच्छा लास्ट गेम है क्या इसलिए. अच्छा अर्जुन प्लेड h3. ये देखो भाई, इसे बोलते हैं अब टूर्नामेंट जीते तो भाई दिल जीतेंगे. h3 h6 e4 c5. हेलो. ये क्या ही है. एनीवेज, शो ऑफ मत मारो अर्जुन भाई, ठीक है यार, शो ऑफ मार रहे यार. आई हेट वेस्टिंग मनी. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी भाई, आई प्रॉमिस. By the way, queen need to play now, attacking the knight here. The knight has to go to c7, and then you can play 95 h5 and maybe launch an attack, little bit of an attack. चेसिबल में कोर्स से कॉस्ट देख के आपका $2000 कोर्स सही लग रहा है भाई. कोर्स $2000 नहीं है भाई, आई थिंक 2000 का है, 2500 का कोर्स होगा. But it will give you a complete repertoire, yeah, for d4 d5 d4 से. Aravindh advantage, क्या बात कर रहे हो तुम. नहीं, this is opening theory man, this is not advantage. ये opening theory है, typical wild kid advantage. This is not advantage, it's still opening theory. Let's go to the game of Nihal because run system है. Let's go. It will win for 1 year champ TY. 1 साल पूरा रहेगा. 1 साल is more than enough to learn the opening. आपका कोर्स भी है. हाँ भाई, कोर्स चेकआउट करें यार. और मैं वो सारे कोर्स अपग्रेड करने वाला हूँ लंदन के अलावा. That will happen once this tournament ends from 7th of every day I'll update like 1 day of the course. So within at the end of this month वो बाकी सारे कोर्स भी एपिक हो जाएंगे. Just like the London, yeah. अभी भी एपिक है, but अभी they are more like you have to put in more effort because it's more puzzle based. I'll make it more video based. Now, not now. Practical chances for Nihal. I do like Nihal's position. Rook h3 could be a move, yeah. Playing Rook g3. Rook g3 could be an idea, and then knight e5. रन के अलावा कौन से कोर्स है बाकी तो स्ट्रैटेजी बेस्ड है भाई. लाइक इफ यू वांट टू इंप्रूव रेटिंग ओवरऑल कोर्स लाइक मिडिल गेम, एंड गेम, ओपनिंग्स, एवरीथिंग कंबाइंड. बट एक ओपनिंग कोर्स स्पेसिफिक फिर लंदन सिस्टम ही है भाई. आज निहाल हारा तो आप गिफ्ट करोगे मुझे कोर्स. गोपाल कृष्ण भाई, ये मतलब अगर जीता तो आप कोर्स खरीद रहे हो क्या.
आप खरीद रहे हो क्या कोर्स? रौनक रौनक को चैट में लिख रहा है भाई तो जीतने का 50% तेरा, ये क्या है? 2500 रुपये भाई, ऑफ कोर्स। आई थिंक 2500 लंदन वाला है, बाकी तो सस्ते भी। और पेरिस से बेहतर लंदन है, इस देश में रवीना टंडन है। अरे वाह, क्या क्या कोट है भाई, आप तो पोएट निकले। सिस्टम पे डालो कोर्स, उसमें भी डालूंगा यार। आई हैव अ प्लान ऑफ डूइंग दैट। इट विल हैपन बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक। आपको कितना मिलेगा भाई? क्या मिलेगा भाई? कोर्स का तो पूरा मिलता है ऑलमोस्ट, आई थिंक कुछ 2-3% ही कटता है, 5% आई थिंक। एनीवेज चैट, बाय द वे, I think Nihal is going to push here. He has some pressure. Let's go to the game of Vantika now. And देखो Chidambaram going for a queen trade. Not in a million years he would exchange queens against Vantika, but he knows he needs a draw. Queen trade. कितना भाई, tournament situation can influence your style of play. That's very interesting. And yeah, he's going for a draw. I am from Thapar. Yeah, I graduated from Thapar, yaar. Yeah, you can go for it, Leah and Fit Strong, for sure. I think for your rating, the foundation course and the London system course would be the best. You can choose any one of them. Or both. Rai Lopez pick, banao course. Rai Lopez, I don't know how to play Rai Lopez, but I can't make a course in that. Vichy win the classical against Carlson or winning Armageddon. I would prefer classical, but agar mujhe compromise karna, I can compromise for Armageddon also. But he has to win, man. Please. How is journey on chess going? Plans for MGM? Are you preparing? Not for the last few days, bhai. At least. Jahan hi nahi hai, bhai. No, Vichy Carlson, bhai. Vichy Carlson, of course. Knight to B3. Okay, interesting move. I'm not a big fan of knight to B3 here. Yeah, not 95 immediately, but knight B3 is not so logical, right? Because you're going in the wrong side. I think he wants to play knight E5. That's why he played knight B3. Like, Kalko, if I take, he can capture with the knight. But this, of course, is a bit risky because he's going in the wrong direction, yeah? Who is winning this tournament? For now, it is Chidambaram, yeah? If Chidambaram draws, it's over. Okay, interesting position. Chat, you will not believe this. This position is actually tiny bit better for black. That is Vantika. But okay, let's go back. Yeah, the London course is good for all ratings, I think. All ratings. Usme koi rating ka wo nahi hai. Nihal has 29 points, chat, and Arjun, Chidambaram has 31, so he's 2 points ahead. Not a good move. Not a good move, CD4. Not a good move. Now Nihal has a slight edge. He can also castle queenside, chat. He can now castle queenside and launch his G pawn for an attack. I think Nihal Sarin is going to win this game. Nihal Sarin is going to win this game. What's happening to Chidambaram? The stakes are higher now for Chidambaram. Okay, equal position for Chidambaram so far. It looks very equal. Let's go to Nihal's game. 95 played. Yeah, he's preparing G4, G5. अगर भी जीते तो कोर्स ऑफर में देगा क्या? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. ऑफर हम आई थिंक हमें रखा था पहले पीछे. पिक्चर भी बाकी है दोस्तों. एग्जैक्टली +0.5 and Tikku be like he's winning. The reason is I play the London a lot, and if I had this position, I'd be very happy because my plan is simple. G4, G5. What do you do? If I get 2 free moves, what do you do now? See how scary it is? I'll show you how scary it is. डर लगा क्या थोड़ा सा? डर लग रहा है क्या थोड़ा सा? है लगा के डर के नहीं लगा. So वही कह रहा हूँ. So it's very difficult, and the center is close, so my king is even safe on D1 for now. He should exchange knights. He has to exchange these knights. These are very, very strong knights. अरे विशी कार्लसन रे. हाँ, वो 3 लोगों ने लिया था भाई. लक्ष्य भाई, हाँ, एक बार मैंने मिस्टर बीस का फॉलो किया था. 32 पे टाई ब्रेकर्स. नहीं, आई थिंक टाई ब्रेकर्स. आई थिंक अरविंद इज बेटर ऑन टाई ब्रेक. So that means कि भाई, he will win. Oh, he's trying to trade queens. Trying to desperately trade queens. Chat, the thing is, lekin, even trading queens is better for Nihal. Even this is the end game is better for Nihal. So I think Nihal Sarin is going to win this game, most likely. Raunak not in the best of form in this game. Let's go to the game of Vantika. Vantika playing some good moves, equalizing against Aravindh. So Aravindh so far is not winning at all. 20 करोड़ क्या है भाई? What is 20 करोड़? I don't know. Net worth कुछ भी भाई. मेरी net worth कोई भी random super chat into 5 कर दो भाई.
To be honest, is your course worth it? Depends, no. If you want to get better at the game, like seriously, like मतलब अगर chess मजे के लिए खेलते हो, then maybe it's not the best for you. If you want to improve at the game, or you want to support us, both ways it works out. 30 crore. Nice. धमाल movie देख के आए हो? By the way, Bishop for played. Let's go to the game of Nihal. Beginner books तो वही होंगी यार. Winning chess tactics by Sarwan हो गई. My system balance which. Basic beginner books, yeah, tactics की, puzzle solving, mate in one puzzles. You don't require some specific books, any mate in one puzzle. But of course, how the pieces move, you require some different kind of books, which I think you can find in our beginner course or also in any beginner book. Yeah, I think just Google it. There's this course by I think नाम भूल गया मैं उनका सर का जो beginner course है पूरा वो इतना Amazon पे. It's also there. I forgot the name. Why so much hate with Aravindh after just a kid? Why can't we appreciate? I am appreciating his play indeed. All I'm saying is we are enjoying the excitement of who will win. Aravindh wins, I'll be very happy. Nihal wins, I'll be very happy. Both are equal, like both are deserving of this match for sure. Profils are very, yes, exactly. Unka bhi course अच्छा है. Arvind's game is looking equal to me. So if Aravindh draws, he would be really happy. He could just take on d7 as well. He could just come back with a knight. He could play knight df3 as well. So I think this position is equal. It's very hard to imagine Vantika winning this. So maybe Aravindh is the winner for this tournament. But for now, Nihal Sarin is better. So the game is not over. And tie breaks can change at any moment. We don't know for sure. Can anybody confirm tie breaks mein kitna aage hai? Can anybody confirm how much ahead Aravindh is in tie breaks? Because Aravindh और Raunak का Nihal का match आपस में draw हुआ था as far as I know. So can anybody confirm this? कोई check कर लो या जाके. Nihal is just more supporters. No, I think it's we just want to enjoy a close match, yeah, nothing else. I mean close match enjoy करना चाहते हैं because सारे Indian है, so it's not like कि मतलब Carlson विषय है जहाँ पे हम बिल्कुल biased है, so it's a close match. Aravindh has more wins, so in that case if Aravindh has a better tie break, but of course Nihal will get one more win, Aravindh will not. If Aravindh draws, but Aravindh has one extra win, but if Nihal wins, he gains that win by the way. So are you sure? Can anybody confirm this? I think ये confirm करना पड़ेगा हमें. Arjun Carlson S3 ठीक है भाई पूरन भाई. He plays king d2. This is the power of the learner system भाई. The power of the learner system. You can literally play the king on d2 and it's perfectly safe. Which book should I choose? Go for Gelfer's Positions Handbook. That's a really good book. Arvind 260 से के साथ अच्छा इतना अच्छा खेल रहा है Arvind for candidates. Chat to like the stream. Let's get to 500 likes if possible. And if you're here for the first time, do subscribe to the channel, guys. हमारी family में शामिल हो जाए, मजा आ जाएगा यार. Which opening Vishy will play? I think he'll play 1e4. I expect him to play 1e4. He's been playing this for a long while. We saw him play against that bishop b5 against MVL. So he's not scared of 1e4. Nice dress. Thanks, bhai. लंदन खेलने के बाद भी क्वीन कैसे मर गई भाई? तुम खुद देखो ना. लंदन का जादू देखो भाई. निहाल is better. He is better. In a must-win game, he played better game. He played learning system. Which one do you like more? Laminar flow or turbulent flow? None, bhai. Arvind 10 wins, Nihal 8 wins. Oh. And if the number of wins is the tie break, in that case, Arvind would win even if Nihal wins. So, phew. That means that the only way Nihal wins is if he wins and Arvind loses. Let's go to Arvind's game. Kya chal raha hai? Arvind ka dekho. He is almost 2.5 minutes behind Vantika in such a simple position. That tells you he's under some pressure, right? It's very obvious he's under pressure because otherwise he'll be playing so fast right now. And he knows he has to draw this game somehow. Maybe उसने side by side काका से वो calculate कर रहा है tie breaks. Let's go to Nihal's game again. लेकिन if Nihal does not win, it's over. So Nihal का जितना सबसे पहले important है, उसके बाद tie break देखे जाएंगे. सबसे पहले Nihal has to win. Arjun game is not so important, chat. It's kind of better for Arjun. He's winning, but it's not so important in the scheme of the tie breaks. Only Nihal and Aravindh have a chance. As you can see, both have 29 and 31 points respectively. And Nihal needs to win basically to have any chance. Aravindh came back, man. He's won so many games in a row. अरविंद भाई ने पीस दे दिया तो क्या होगा भाई? फिर तो पूरा मैं कुर्सी से कूद पड़ूंगा भाई, क्योंकि गेम पूरी क्रेजी जाएगी.
F5 for Nihal कैसा move है? F5 पे I think E5 can be played and that might not be so great. So having the pawn on F4 is good because it prevents E5 from black. So pawn F4 पे रखो. In fact, let's double the rooks. Rook E2, rook E1 and try to put more pressure here. Standings ये नहीं chat रुको. Standings दोबारा दिखाता हूँ एक बार. Oof man, very interesting moment. Yes, standing the chat, you can see Aravindh on top, Nihal second. Only two guys who can win this tournament. Get a spot, in the main city event for one tournament. It'll be interesting. Aravindh was underdog in this tournament. Yeah, he was. He was not expected to win this. We all thought Arjun and Nihal jeetenge. Maybe Raunak as well. But suddenly Aravindh is winning this tournament. And Nihal is the only one who can stop him now. Nihal, the master trickster, won the last game. Awesome. Just checked. Yeah, he won a completely drawn position. शाम हो गई. अब किसी को more question पूछ दो. मत पूछना please. भाई अभी नहीं यार. रात को पूछेंगे वो. विशी वाली stream में. If you win against Carlson and Lundstrom opening, I'll buy a course. Thanks, bye. Thank you. If I do that, I think that I don't need to tell you to buy it. I think अपने आप लोग ले लेंगे. Thank you for giving Arun bhai. Let's go, bhai. E6 played. Now chat. One more thing. He's doubling up rooks as well. So this rook is coming to E1. And then you can consider F5 because you will have enough control over E5. So I think Raunak Sadhwani under huge pressure. He can't even move his rook here and here because of knight E7 check and picking up the rook. Rook is tied down with king F8. But still looks difficult. G5 एक तीर से निशाने. G5 is possible as well. Also possible I think. But G5 के बाद takes के बाद E5 थोड़ा सा. Although G5 is not so bad, I think, as F5, but I would prefer first doubling up rooks. That makes more sense. Recap, chat. So basically, we had Nihal and Aravindh fighting for the top spot. They have both managed to win a few games. Nihal pulled up a complete, scandal in the last game by, winning a completely drawn game by a trick. And now Nihal has to win this match to have any chance to finish first. And if Chidambaram needs a draw, that's it. All he needs is a draw. And he has a completely drawn position against Vantika. Completely drawn. And if he draws, the tournament is over. Nihal Sarin would come second and Chidambaram would win. So let's go to Nihal's game. Knight B7 played by Raunak. Very good move actually. Heading to D6, which would defend the rooks, both the rooks. And this knight can also come to C4 later, giving a fork on the king and the rook. So probably rook A1 now. Check the other game. Why draw? If ever buys a course, he'll improve his rating and he'll not put some ajib questions. Completely lost the for Nihal last game. Yeah, exactly. He was -9 at one moment, man. He was -9 at one moment. Light gayi thi, bhai, ruko. Will the first player qualify only? Yes, only first player. Top 8 will qualify for the next leg though. So top 8 players will get a chance to, basically play the next leg as well. But if you want to qualify in this tournament, you have to come first. If Aravindh draws and Nihal wins, then what? Then Aravindh goes through because Aravindh has a better tiebreak, apparently. So Aravindh will go through. Filhal ke liye rook c7 incoming. But I think, she trades rooks. This is a dead draw, chat. Aravindh Chidambaram heading to a draw, spoiling Nihal's dreams. Nihal is still calculating against Raunak. What should he play? Green screen enlightenment. Chat, do like the stream. Let's get to 500 likes at least before the stream ends. If you are here for the first time, do subscribe to the channel, guys. Green screen enlightenment. Yeah, I will light it aata hai yaar. G5 is okay. He plays B3, so preempts knight D6 and knight C4. But black also has knight B5 ideas, by the way. Okay, knight B5 is not so great actually. But I think he can also just play rook C7 and double up rooks on the C file after king F8 maybe. So also decent for black. So black is not completely lost just yet. He doubles up rooks for now. Qualification to the main CCLT event, yeah. King F8 now defending the rook maybe. Yep, Aravindh is going for a draw. He's changing all the pieces. He knows draw is enough. Why you fake laugh? My laugh is a real laugh. By fake laugh nahi, really ऐसी है. क्या करे भाई? There should be 1 versus 1 in tiebreakers rather than more wins. I know they should be, but they've kept it like this, so we can't do anything. हमारे हाथ में है ही नहीं. Nihal undefeated and Aravindh on 6-game winning streak. Oh my god, crazy. 6-game winning streak, insane. Aravindh is leading right now, bhai. King F8 played, good move by Raunak now. And probably it's time to play knight E5 now, because there's nothing else.
Civil engineering, Vishal bhai. Let's go. What else can you do? Maybe you can play. Yeah, 95 looks like the obvious move to me. You want to exchange one knight and then just try to play f5 or g5 depending on the situation and break through. That's the only thing you can do, I guess. अभी टाई ब्रेक अभी भी तो चेंज हुआ होगा, बट आई थिंक जितना टाई ब्रेक है, जितना चैट ने बताया मुझे उस हिसाब से, आई थिंक चिदम्बरम शुड बी द विनर. ऑल्दो इट्स नॉट कंफर्म, ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा भाई क्या होता है, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली चिदम्बरम इज द विनर इन केस ऑफ ड्रॉ. व्हाई इज दाई नेम टीटू? टीटू नहीं भाई, टिक्कू है यार, साहिल टिक्कू है. टीटू तो भाई मूवी में नाम था उसका. थैंक्स तमीम भाई मेरे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. थैंक्स तमीम भाई. इंग्लिश सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग विशाल भाई. Nihal, by the way, also taking his time. He knows he has to win. He's trying to find the best plans. He knows there's a lot at stake because Carlson से खेलने का मौका है वैसी सिटी में. It's not a small deal. वैशाली और रौनक की रैंक में अंतर देखो ना. वैशाली और रौनक की रैंक. वैशाली कहाँ से आ गया यार? वैशाली is not playing this tournament. वैशाली कहाँ से आ गया? वैशाली 0 पॉइंट से, she's not playing this tournament. बोर्ड्स में कितना मिला 12th में? 87.8 आई थिंक. आप सिंगल टिक्कू हो या डबल टिक्कू? Is it confirmed that Nihal or Aravindh is qualified to next CCT, or will it depend on next two leagues? As far as I know, it's kind of complicated because what I thought originally was that the winner of all the 4 legs combined qualifies and gets to play many tournaments. But I also heard later कि जो एक tournament जीत रहा है, they get to play one tournament in the CCT. So I am not so sure exactly how it operates, but I think as far as I know, if they win, they get a chance. How is Pandali? She's a friend of mine यार. मुझे भी मिला था. नाइस. पता है मेरा एक दोस्त था साल पहले, and he spoke fast like you, and you guys kind of look similar to coincidental stuff. Okay. I don't know why I speak fast. I wish I would speak slower, but I don't know. It's a habit. अरे confusing name है मेरा, मतलब वंतिका और रौनक की रैंक के अंतर. हाँ, of course यार, वो तो होगा ना यार. वंतिका is she's rated around 2300, so it's not easy for her to battle against 2650 players. It's very difficult for her. दोस्त था. अच्छा भाई, दोस्त था बोल दिया भाई. मर गया कि दोस्ती तोड़ दी भाई. होपफुली दोस्ती तोड़ी होगी यार. आई गॉट 96.8. कॉमर्स वाले हो गए ना अमन भाई. अगर कॉमर्स वाले हो तो भाई चिल करो भाई. कॉमर्स में हर किसी के आए थे. A4 प्लेयर नाउ प्रिवेंटिंग B5. आज तो विशी का मैच IPL जैसा है. इंडीड भाई. चैट आज विशी सर के यहाँ जरूर पहुंच जाना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एन एपिक बैटल. मतलब आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम फॉर दैट मैच. आई मीन that's going to be like Vishy lost to Carlson twice in the World Championship. Just imagine. And he has a chance to take that, I don't know if you call it revenge, but whatever it is, man, it's going to be insane. It's going to be insane. And I really, really want Vishy to win. So let's go chat. Let's support Vishy with this. We want him to win, bhai. ये लिंक है उसका भाई. I think पहले जाके लाइक जरूर कर देना भाई. पहले ही जाके लाइक कर देना भाई. पहले ही जाके लाइक कर देना यार. मतलब क्योंकि भाई आई थिंक दैट आई वांट दैट स्ट्रीम टू बी फन, एंड आई वांट इट टू बी लाइक विशी जीत गया तो बस मजा आ जाएगा यार. आई एम एन एमबीबी स्टूडेंट एट एम्स, सो नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट. अरे भाई साहब, फिर तो कैसे कर लिया आपने यार 96%? इतने स्मार्ट कैसे हो यार? Did he defeat Carlson in classical? I think he did once, but I think he recently defeated him in Blitz also. So he has chances. Carlson lost to Vishy in the Blitz, and at that time he had a draw in hand, and he went for the win and lost. So he might not be as confident this time. Supporting Vishy, but बिचारी अनीशा को support कौन करेगा? Anisha will support Vishy as well, I'm sure, today. And Chart 67 played. Aravindh की गेम अभी चल रही है. अभी भी चल रही है गेम. They are not agreeing to a draw, so Nihal still hopeful. Whose type is better? I think Aravindh's type is better यार. आयन भाई इतनी बढ़िया परसेंटेज कैसे लाई यार? आप एम्स में पढ़ा? अरे भाई, अच्छा एम्स में हो? भाई एम्स में घुसना पता है कितना डिफिकल्ट है चैट. लाइक 40-50 मेरे टाइम पे तो 40-50 रैंक लानी पड़ती थी यार. भाई इतने स्मार्ट कैसे हो आयन भाई? टिक्कू जी यार, क्या आप चेस क्लासेस लेते हो? अभी नहीं यार. डू जाएगा तो कोर्सेज बाय किंग इन द रेस्ट ईस्ट बाय को चेक करना है. ब्लिट्स एंड क्लासिकल में अंतर है ना. क्लासिकल में मैगी इज लॉट मोर स्ट्रॉन्गर. आई नो बट विशी इज आल्सो स्ट्रॉन्गर भाई. ही इज बीन प्लेइंग सो वेल इन दिस टूर्नामेंट. Classical में he's not lost a single game, just to point it out. Against Wesley So also he was better. मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आना बाकी है. Yeah, but I mean still it's crazy, right? 1/11,000 ratio to get into games 2021. Oh my god भाई, एवन भाई का तो फैन हो गया मैं यार.
नाम भी यूनिक है. इतना स्मार्ट होके यहाँ क्या भाई चेस स्मार्ट लोगों का गेम है भाई. सो ही कैन बी हियर आई थिंक. बाय द वे रौनक बहुत सोच रहा है. अब चल भाई. ये तब के लिए ब्लिट्स रखना था, आर्मर नहीं रख देते. ओ नाइट c5 played, now king c2. Oh, he plays g5. He's trying to break through on the king side now, but after this black gets the f5 square, but white is still better. Black has to take, I think, अगर g6 भी आ सकता है. इतना ना स्मार्ट इंसान साल की स्ट्रीम कैसे देख रहा है? निहाल losing, I don't think so. Aeon is lying. भाई साहब स्काई भाई इज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता. मेरे डैड मुझे बोल चुके हैं शर्मा जी का लड़के का नाम शर्मा होता है. हिज नेम कैन नॉट बी एऑन, इट्स इम्पॉसिबल. सो वो कह रहे हैं भाई. Arvind result. Arvind result is still, the game is still going on, chat. It's still equal. The game is still going on. Are Raunak chances over? Yes, they're absolutely over. He can't win the tournament. Only it's like 98% chances for Arvind and 2% chances for Nihal and 0 for everybody else. Vantika has to pull off an upset for Nihal to have a chance. भाई साहब क्या क्रेजी है यार. लेकिन insane dude, insane. मतलब the thing is इतने सारे juniors ही हैं. They're all juniors man. None of them is like, you know, none of them is like some crazy guy. Yeah, मतलब it's like all of them are juniors. All of them are juniors. So it's insane how well they are playing. Big thing. Yeah, big thing. I had 60% 12 with 19 maths and physics. Wow! Stop invalidating others' achievements in the chat. Wow. अच्छा वो तुम उसकी बात कर दूसरे बंदे की. सूर्य का ट्रिगर. कोई कमेंट में धक्का मुक्की नहीं करेगा. बाय द वे धक्का मुक्की तो यहाँ चल रही है भाई. क्या करोगे? Oh, now I think not the best move I think, because the b5 pawn can be weak and the knight on d6 is passive to defend this pawn now forever, and white can also gain control of the a file. So I think not the best move. a5 is also possible by the way. Who is winning? I think most likely Chidambaram for now. Let's look at the evaluation. क्या कह रहा है भाई exactly? I think equally होगा. Equally लग रहा है भाई, equally लग रहा है अभी मुझे. Let's go back. I think Vishy also must be thinking to get revenge in the game against Magnus. I mean, he surely wants to win because he's been playing so well. होता क्या है, when you're playing well, right, you really want to test yourself, because if you lose to Carlson, you feel, ठीक है, I played well, but maybe I'm not in my peak form, तो Olympiad छोड़ो. But if he defeats Carlson, he's like, वो तो मैं 2013-14 में भी नहीं कर पाया यार. I defeated Carlson in Blitz and Classical. I'm in really good form. Maybe I should play the Olympiad. Like you can see the thought process here, and maybe he plays, and maybe India wins the Olympiad. Dude, come on, यार जीतना चाहिए Carlson के साथ यार. I really want him to win. Nihal down in time, yeah, very low in time, and he has to find some good moves really fast. Look at the horses in Nihal's match. Yeah, they form a nice ऐसे shape ना. अरे nice. तारा बस ऐसे सर्कल में डांस करने लग जाए, ऐसे बोलते ना तारा. अगर चारों में सर्कल में डांस करने लग जाए मजा आ जाएगा भाई. He won't be playing the Olympiad, no. You never know, man. You never know. What's your opinion on the fact chess related to intelligence? I think that's bullshit. If you play chess a lot, surely it will improve your, your foresight over decisions, and your confidence and your decision making and everything, but not like intelligence. Yeah, matlab it makes you practically better, not like biologically better. Not for Nihal for time, it is classical for him. That is true. This is indeed classical for him. I have to agree, chat. I have to. This indeed looks like classical. Arvind drew, they repeated. Really? Did Arvind draw? Chat, I don't know. I don't see the draw just yet. For now, I think Nihal's game is still going on. G6 played now. Chat, if Arvind draws, I will end the stream, because I think if that's over, that's pretty much over. Usi time I'll end the stream. We have to wait for the result though. G6 played is trying to get to the black king now. वापस जब उसको विड्रॉ करा देते हैं, आनंद को स्पॉट दे देना. रजाव ने खुद विड्रॉ किया था भाई. Very unlikely he will be so kind as to withdraw. Is there para chess? There is similar chess. I have heard there's similar chess. There are tournaments. People who are disabled or especially able in some way.
Yes, obviously, otherwise Elon Musk would be broke. If there was a normal tournament, normal points, Nihal would be winning. I know, but I think we should incentivize wins. Otherwise, सारे draw करते फिरेंगे यार. If you've not seen the Grand Prix tournaments of like 5 years back, कई लोगों ने देखा नहीं होगा. वहाँ पे क्या होता था? Literally सारी गेम में draw होती थी भाई. Every single game was a draw. Like result मतलब 4 दिन में एक बार आता था यार. And that's why they had this, knockout phase of the Grand Prix now, जहाँ पे लोग people have to win. So you have to incentivize wins, otherwise कोई जीतेगा ही नहीं. Nihal is on time. He's basically making the match a bit interesting. Otherwise, तो loss है ना यार. रौनक क्या ही करेगा? Best design award, yeah, possible. Although now the knight is coming to c4, so black is kind of equalized. Oh, by the way, do you capture here? You could take on f7 now. Nihal will win speeches if not this tourney. That's true. He's playing Arjun again tomorrow, chat. By the way, important, yeah. If this knight was here, then knight would be mate. That should be mate then in that case. Only square is king g8. Open National Navy, एक बार 12 लोग tied थे for first place. Yeah, it happens a lot. This will be the last verse. Vishal Nagi. Yeah, I was thinking so. Yeah, I was thinking about it. This might be possibly the last classical Vishy versus Magnus. It is possible. It might happen. कि ये last ever Vishy versus Carlson हो. So this is going to be an epic match. Can we win the Olympiad? Yes, we can. Although US team में क्या करे वो पता नहीं है. उनके खाने में कुछ उनको डायरिया करवाना है कि बोर्ड पे रहना है वो सोचना पड़ेगा. Does Olympiad have rating? Yes. निहाल फैन निहाल को ब्लिट्स खेलते हुए इसलिए वो 1 मिनट पे जा रहा है. Exactly, he wants to play bullet. He's missing bullet chess, I think. By the way, black is extracted in exchange for now, but because knight c4 is incoming, I think he will gain back the exchange, so he should be fine. Chat, Aravindh Chidambaram has drawn his game. He has drawn his game. And that means he is the winner of the second leg, I think, of... I think, by the way, tiebreak, we are not sure. But as far as I know, Aravindh Chidambaram has drawn. And he will be the winner of the second leg of the Imperial Chess Tour. And he will get one chance to play in the main city event in one tournament. So, that is awesome. I think Nihala game becomes inconsequential now. So, we will end the stream because Sham ko bhi stream karni hai. And thoda rest bhi karna hai gale ko. So, chat, thank you for watching in. एक काम मैं करना चाहता हूँ यार. I want you to go to this stream if you can, it really help out. Go to this stream and do just like it, ठीक है? I'm redirecting you to the other stream. Do like that stream and 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना chat. It's going to be epic match between Vishy and Carlson. It might be the last ever in classical, also possible because classical chess is rare nowadays. Do like the stream, guys. I'll see you at around I think 8:30 p.m. again. Bye chat. See you soon. Take care. Keep smiling, chat. Yeah, do like that stream, chat. Do like that stream. Who won the first leg? First leg was won by Arjun bhai. ठीक है, chat. Bye bye. Take care. Do like the stream, chat. Help कर देना. I'll see you soon. Take care. Keep smiling. Bye. Bye.